Good evening to all of you. How are you? Hope you all are well. Today topic is GST returns, very practical return. Very practical topic, and we need to discuss practical as well as theoretical aspect. And Hemant, have you tried the GST return at all? Very good evening, beta. Have you tried the GST return? आपने कभी GST return फाइल किया है? Oza, Jeannie, have you filed GST returns? Just asking. Not yet. Okay. No, fine. No problem, beta. So, what is the GST return? We'll discuss very basic and try to understand all the provisions. Okay. So, let me start. Now, the registration under the GST can be under various category. Do you agree with this? The GST registration can be under regular category, can be under composition category, can be under TDS category, can be under TCS category, right? Accordingly, the GST returns would be applicable. Can you please tell me that any one or two categories of the registration and under which categories or which type of the returns would be filed? Any one category. Yes. TCS, TDS, 1-3B. Okay. So, fine. No problem. Thank you. Now, there could be the multiple category in which, let's say, I am taking the example of regular category of the registration, in which the major return would be GSTR-1, GSTR-3B, and 2A and 2B ka concept is also there. Similarly, there could be the composition category of the registration, in which the composition dealer has to file the CMP 8 on quarterly and on yearly GSTR 4. Similarly, there could be the multiple other category TCS, TDS, ISD, in which they will file another categories of the return. Like here, the GSTR 7 would be applicable. Here, the GSTR 8 would be applicable. Here, the GSTR 6 would be applicable. Like there is one more category, non-resident taxable person. Here, the GSTR 5 would be applicable. And I hope you have heard the word of OIDAR, Online Information Database Access Retrieval. And in this case, they will file the GST return GSTR-5A. The major discussion would be under regular category, or max to max would be under composition. Rest of the things will, if it is in syllabus, then we'll go through the study material. Otherwise, we will do the longer discussion on these two categories. If I am registered under regular category, means most of the person you will find registered under regular category. Then they will issue the tax invoice, they will collect the tax from the customer, and they will pay the tax to the government. Whatever the value of the goods, let's say I am providing the goods to you. So my worth of the goods, let's say 1 lakh rupees, and the GST rate is 5%. So I will raise the invoice wherein the value of the goods would be 1 lakh, and I will charge the GST 5,000. I will total collect 1 lakh 5,000, and then 1 lakh I will keep with me myself, and 5,000 I will pay to the government. Payment would be, might be, there could be
some input tax credit, let's say 1,000 rupees. So I will use the ITC of the 1,000 and balance I will pay in cash. This is the regular category. What is the role of the difference? What is the role and the difference between 1 and 3B? Now, 1 would be the details of outward supply. मैंने कितना सेल किया है, that I will report in the GSTR1. R1, GSTR1. In short, I will use multiple time. Might be I will use multiple time only R1. Instead of GSTR1, I will use R1. Instead of GSTR3B, I will use R3B. नो प्रॉब्लम बेटा. अभी जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? मुझे इतना बताओ बेटा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम सेइंग? बस, और उसको भूलना मत. See, whatever I'm saying, it should be remember. You make a note or you watch the video multiple times before coming to the next class. कल जब आप आओ तो जो मैंने आज पढ़ाया ना वो पूरा याद होना चाहिए और पूरा कंसंट्रेशन के साथ 3 घंटे बैठना आपको. ठीक है? मेक श्योर यू विल सिट विद द कंसंट्रेशन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज. ठीक है? अभी क्या हुआ? GSTR1 is the details of outward supply. Outward supply OS. Now, in the GSTR3B, the supplier will again report the same but in the summarized manner. So he will report the tax liability is 5,000. He will report how much is the ITC and the balance he will pay in cash. It means the GSTR3B. It means the GSTR3B would be summarized return, wherein he will report the consolidated information of outward supply, ITC, and payment of tax. Now let's go further. अभी तो हम सिर्फ बेसिक की बात करें. We'll have to talk for half an hour, 40 minutes, something like that on the basic. Then we'll go into the chapter. अभी हम बात नहीं कर सकते. Directly we cannot start the teaching. I have to develop the base regarding the GST return. ठीक है? Tell me one thing. Tell me one thing, that if I am registered under composition category, which return I will file? If I am registered under composition category, which return I will file? If I am registered under composition category, then which return I will file? Absolutely correct. If I am registered under regular category, by which return I will report my outward supply? If I am registered under regular category, by which return I will report my outward supply? What is the GSTR3B? Absolutely correct. What is the GSTR3B? What is the GSTR3B then? What is the GSTR3B? Again, summarized return. I will pay the tax from the GSTR1 or I will pay the tax from the GSTR3B. I will pay the tax by reporting the value in the GSTR3B or GSTR1. See, let me repeat once again. GSTR1 is the details of outward supply. Then I will use the GSTR3B
for outward supply, how much is the ITC and the balance liability to be discharged, balance tax to be paid. So it means GSTR-3B is the return by which I will pay the tax. GSTR-3B is the return by which I will take the ITC. Now you tell me you have already completed the ITC chapter. You have already completed the ITC chapter. How the recipient will take the ITC? On the basis of which document? On the basis of which document? He has the tax invoice. He has the received the goods or services. Now, what the supplier should report, then it should communicate it, then only he can take the ITC. Basically, I am talking about one of the condition given in the section 16(2). मुझे बताइए ये जो इनवर्ट सप्लाई है, ये परचेज है, ये कहां पे डिस्क्लोज होनी चाहिए, कहां पे अपीयर होनी चाहिए, then only he can take the ITC. Can you tell me, please, my dear friend, the ITC chapter has already been completed and I am using the clause also. Read with rule 36(4), which you should remember that मुझे ITC कौन से डॉक्यूमेंट में वो सप्लाई आएगी तो मुझे मिलेगा. जो मैंने परचेज किया है, in which document it should appear, then I can take the ITC in the GSTR-3B. I'm talking about the GSTR-3B ka ITC. I'm talking about this ITC. I can take. When I can take? If I have the tax invoice, I can take? No. Absolutely correct. The name कहाँ पे ये appear होना चाहिए? ये GSTR-2B में आना चाहिए. Do you have the study material? Do you have the study material or any notes of input tax credit? Do you have any hard copy of the study material, notes, or soft copy of the material or notes for ITC? Quickly go in the ITC chapter, go to this clause AA. Go to this clause AA. मेरी बात मानिए, 1 minute लगेगा. Go to the study material, go to the ITC chapter and read the clause AA. 16 subsection 2 clause AA. हेमंत, आपके पास बुक है? अभी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you have, then kindly read. Spend 1 minute. ITC चैप्टर हो गया ना आप क्या? I hope ITC chapter has already been completed. Oh, so, oh आशुतोष, मैंने देखा नहीं यार, आप इधर देखी नहीं मैंने. I'm so sorry. So yeah, I can see your chat. I can see your reply. Very nice, very nice. CMP 08 है शायद ना? You are writing CMP 04. नहीं, CMP 8 है और CMP 8 है और GSTR 4 है. But very nice. Very good knowledge. ऐसा करता हूं, मैं ही चला जाता हूं. Give me 1 minute. Let me go. Let me open that study ITC chapter and in front of you, and let me highlight that word. Read. Details of invoice or debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supply. What is the statement of outward supply? GSTR-1. See, normally I am using the word GSTR-1 as a return, but actually if you go by the language, it is statement of outward supply. They have not used the word GST returns. For GSTR-3B, they have used the word GST return, monthly return or quarterly return. But please note, in the GSTR-1, if you write somewhere, you will always use the word statement of outward supply. Okay? And such detail has been communicated to the recipient in the manner. कौन से मैनर में? ये कम्युनिकेशन होगा GSTR-2B के माध्यम से. It means if I am a recipient, then जो मेरा supplier है, he must have filed GSTR-1 and then
Such invoices should appear in my GSTR-2B, then only I can take the ITC. In clause A, it should have the tax invoice. You should receive the goods or services. Taxes has been paid. Every condition are okay. But I'm talking about this condition. Now, because of this, now we need to understand the concept of GSTR-2B. We should also understand the concept of GSTR-2B. Okay? And why it is necessary, I told you. Clear है वो? अभी I hope it is clear till now. अभी आगे बढ़ते हैं. Now, again, what is the GSTR-1? GSTR-1 is the statement of outward supply. Statement of outward supply. And what is the GSTR-3B? GSTR-3B is the details of, not details. It is summarized return. It means in this, basically, I will disclose my outward supply. I will disclose my input tax credit. I will then make the payment of tax. So there would be multiple table which we will go and see, but this is the overall. Now, in this case, you will take the ITC on the basis of which document? The GSTR-2B. You tell me the question, very important question to all of you. The transaction in the GSTR-2B, let's say it is Mr. A. Transaction in the GSTR-2B of Mr. A will appear on the basis of GSTR-1 filed by Mr. A or filed by his supplier or filed by his customer. मेरा क्वेश्चन ये है कि मिस्टर ए के 2B में जो ट्रांजेक्शन आएगा वो मिस्टर ए के GSTR-1 से आएगा, मिस्टर ए के सप्लायर के GSTR-1 से आएगा या मिस्टर ए के कस्टमर के GSTR-1 से आएगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन. हेमंत, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. किसके GSTR-1 से आएगा? ऑब्वियसली सप्लायर. मिस्टर ए अपना तो GSTR-1 भरेगा तो जो उसके कस्टमर हैं उसके कस्टमर के 2B में जाएगा. एम आई राइट? Once A filed the GSTR-1, then his customer would be able to see that invoice in the GSTR-2B. अगर मैं 2B of Mr. A की बात कर रहा हूं तो उसने जिससे परचेज किया है, once they file the GSTR-1, it will appear in the GSTR-2B. Fine. Now, see, government has put one restriction which we will discuss in language, but GSTR-1 has been filed by the due date. Let's say I'm talking about the December 24 ka GSTR-1 has been filed by the due date, then it will appear in the GSTR-2B in the same month. तो अगर मेरे सप्लाई ने मिस्टर ए के सप्लाई ने GSTR-1 has furnished within the due date, then my Mr. A ka purchase will appear in the same month. Suppose he is furnishing the GSTR-1 after the due date, then it will not go to the same month. It will carry forward to the next month to be. क्या loss होगा? What would be the loss? I am Mr. A. Suppose it is not appearing in this current month. It is appearing in the next month. What is the loss? What would be the loss? What would be the loss? Yes. नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं. I'm not talking about my supplier का loss. I'm talking about my loss. See, I am Mr. A. I have purchased some transaction. Supplier has filed the GSTR-1 after the due date. Then what would be the loss to me? A को क्या loss है? Think and then give me the answer. Think and then give me the answer.
No interest. See, I will pay the tax or supplier will pay the tax? My supplier will pay the tax now. If he is furnishing the lead, then he will pay the interest. But I'm asking about my loss. I'm the customer. I am Mr. A. I have purchased some inward supply. I have taken some inward supply, and now my GSTR1 has been filed. Now the supplier has filed his GSTR1 after the due date. What would be the loss to me? Interest तो उसे pay करना पड़ेगा. What would be the loss to me? My loss would be I cannot take ITC. Absolutely correct. It is a ITC loss. क्या मैं ITC दिसंबर में can I take the ITC? Can I take the ITC in the December? Answer is no, because it will not appear in my 2B. In which 2B it is appearing? It is appearing in the next 2B. So my ITC would be deferred for next 1 month. Do you agree with this? कि यहां पर मुझे ITC का नुकसान हो जाएगा. Here I am getting the problem. Here I am getting the problem of input tax credit. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Now there is one more concept has been added in the law. अभी हाँ, absolutely correct. Hemant, absolutely correct, बेटा. Now suppose I have filed GSTR1. Now there is some mistake. There is some wrong reporting, or there is missed reporting. Means, let's say mistake क्या था? I have reported the invoice number 1. It was for value of rupees 10,000, but instead of that, I have wrongly reported as 1 lakh. Or I have used the wrong GST number. Invoice number 1 was supplied, made to the Rakesh, but I have reported wrongly invoice. I have reported the GST number of Ramesh because it was more or less same. So clerical mistake, Ramesh का GST number मैंने use कर लिया. Or invoice number 2 was not added by me in the GSTR1, it was missed by me. Government has introduced the one more concept, that is GSTR1A. What is the benefit of the GSTR1A? Point to be noted, same tax period के GSTR1 में अगर कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग हुई है या मिस्ड है, रिपोर्ट नहीं किया, you can rectify, you can amend that detail, or you can add the missed transaction in the GSTR1. Now try to understand very nicely. इसका 2 इम्पैक्ट है, एक लाइबिलिटी और एक ITC. Now the GSTR1A. So tell me one thing. It is the GSTR1 of Mr. A. We are talking about Mr. A. 1 of Mr. A, 1A of Mr. A. ठीक है. And this supply was made to Ramesh. Now tell me, if he has done any amendment or any invoice is being added, who will pay the liability, A or Ramesh? इस ट्रांजेक्शन पर गवर्नमेंट को लाइबिलिटी कौन पे करेगा? He will pay the tax to the government, or will Ramesh will pay the tax to the government? I am talking about government को कौन पे करेगा? एक जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. Now tell me, who will take the ITC on this transaction? Who will take the ITC on this transaction? Who will take the ITC on this transaction? Ramesh. ये ट्रांजेक्शन जब GSTR1A में अमेंड हुआ या 1 में ऐड हुआ, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट ऐड, एक बार ऐड की बात कर लेते हैं. जब ये ऐड हुआ तो ITC मिलेगा नेक्स्ट मंथ.
और लाइबिलिटी पे होगी सेम मंथ. Try to understand. Government has created one difference, that whatever you have reported in the 1A, whatever you have corrected in the 1A, so that you need to pay in the GSTR-3B in the same month. But your customer will get the ITC in the next month. Your customer will get the ITC in the next month. Okay. Now let's say what is the due date. Let's understand what is the due date of the GSTR-1. If you are monthly taxpayer, then due date is 13. Sorry, due date is 11. And if you are quarterly, then it is 13. In the law, it is written 10, but the notification has been issued in which they have put the date as 11. अगर आप मंथली GSTR-1 फाइलर हैं तो ड्यू डेट है आपकी 11th आफ्टर नेक्स्ट मंथ, एंड इफ यू आर क्वार्टरली देन 13. What is we need to understand more concept about quarterly, so just wait for some time. ठीक है, just wait for some time. GSTR-3B का ड्यू डेट अगर आप मंथली टैक्स पेयर हैं देन इट इज 20, और अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं, इन शॉर्ट आई विल यूज QRMP. क्वार्टरली को हम एक टेक्निकल नेम है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट. ठीक है, तो उसकी ड्यू डेट क्या है? 22 या 24. वाई इट हैज बीन डिवाइडेड इन 2 डेट? because there is a one portal which everyone will use, so they have bring the concept of staggered manner. So everyone, if will use the same date, then there would be the huge chance of down processing by the system. करेक्ट. तो उन्होंने क्या कहा? मंथली 20, क्वार्टरली में कुछ स्टेट 22, कुछ स्टेट, दो देव डिवाइडेड इंडिया इन 2 स्टेट, कैटेगरी स्टेट नंबर 1 22, कैटेगरी स्टेट नंबर 24. ठीक है, ये ड्यू डेट का बात हुआ. व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ 1A? व्हाट इज द GSTR-1A का ड्यू डेट? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द GSTR-1A? नो ड्यू डेट. Then it is an optional facility. It is an optional facility for which there is no late fees. For which there is no late fees, but it is open for limited time. When it will be open? It will be open after the due date of GSTR-1, after the due date of GSTR-1, and after filing of GSTR-1, whichever is later. Try to understand. GSTR-1 एक कब ओपन होगा? 2 डेट आप लीजिए. सबसे पहले ड्यू डेट एंड एक्चुअल फाइलिंग डेट जो बाद में आती है. सपोज ड्यू डेट 11th है. लेट्स से you tell me, I'm asking the question to you. Mr. A is a monthly taxpayer. If GSTR-1 has been furnished on 10th, what will be the date of opening of the GSTR-1A? कौन से तारीख को GSTR-1A ओपन होगा? On which date the GSTR-1A will be open? स्टार्टिंग डेट हेमंत 20 3B का ड्यू डेट है. मैं 3B की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं GSTR-1 की बात कर रहा हूं. आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ GSTR-1, आफ्टर फाइलिंग ऑफ द GSTR-1, whichever is later. तो ड्यू डेट क्या है? यहां पे लिखिए आप. एक्चुअल फाइलिंग ड्यू डेट क्या है? 11th, और एक्चुअल फाइलिंग डेट क्या है? 10th, whichever is later. तो आपका ये 11th के बाद GSTR-1A would be open. Till which date you can file GSTR-1A? Point to be noted, you can file GSTR-1A till the filing of 3B. यहां पर मैंने ड्यू डेट का वर्ड यूज नहीं किया.
Let me repeat once again regarding the timing of the GSTR1. So GSTR1A, sorry, not 1A will be open. GSTR1A का स्टार्ट टाइम क्या है? GSTR1 का 1A का एंड टाइम क्या है? 1A का स्टार्ट टाइम है, आपको 2 डेट लेनी है और दोनों में से विच एवर इज लेटर का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, और एंड डेट में आपको सिर्फ एक ही डेट लेनी है. प्लीज हेल्प मी टू कंप्लीट दिस चार्ट. Please help me to complete this chart. What would be the start time of the GSTR1A and what would be the end time of the GSTR1A? What would be the start time of the GSTR1A and what would be the end time of the GSTR1A? नहीं, and you should not write the date. You should write the text. You should give me the formula or you should give me the concept that when the GSTR1A will be enabled or available for taxpayer to file and till which date it will be available. तो एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, बहुत बेटा, बहुत बढ़िया मिताली, मिताली बहुत बढ़िया. ओझा जी नहीं, बहुत बढ़िया बेटा. एंड हेमंत, मुझे हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. नाउ ये कब स्टार्ट होगा? कैन आई से हेमंत, एक बात मुझे बताओ, क्या ये हमेशा 12th को स्टार्ट हो जाएगा? लेट्स से आई एम ए मंथली टैक्स पेयर, विल इट स्टार्ट ऑन ऑलवेज 12th? 12 तारीख को हमेशा अवेलेबल रहेगा? कैन आई से? कैन आई से? Yes, sir. Yes, sir. No. Giving the example, let's say Mr. A, who is a monthly taxpayer and filed the GSTR1 on 14th. क्या इस केस में भी इसका GSTR1A will be available on 12th? If late file is there, then it will be after the file. Correct. After तो filing. आपको बोलना पड़ेगा after due date and after filing. After filing of GSTR1, whichever is later. दोनों बात बोलनी पड़ेगी, right? So the question which I asked, will it be available on 12th? Answer would be no. Requesting everyone to give in the chat कि ये कब तक ओपन रहेगा, कब तक ये अवेलेबल रहेगा 1A में. 1A कब तक अवेलेबल रहेगा टैक्स पेयर के पास में टू फर्निश द सेम? मिताली, ओझा जीनी एंड हेमंत, यू ऑलरेडी कंफर्म. वेरी नाइस, करेक्ट आंसर, थैंक यू. मेरा क्वेश्चन है कि टिल व्हाट टाइम the 1A can be filed? Will it be the due date of 3B or will it be the actual filing of 3B, or there is a concept of whichever is later, whichever is earlier? Pick from the 4 options. Option A, due date of the 3B. Option B, actual filing of 3B. Option C, whichever is later. Option D, whichever is earlier. Now pick which option, A, B, C or D. Now kindly pick A, B, C or D. The answer is B. Please note here you will not apply the concept of due date. You will not apply the concept of whichever is earlier or later. There is only one thing, that till that time recipient does not, the taxpayer does not file 3B, till that time he can furnish the 1A. 1A is optional or mandatory? 1A is optional or mandatory? 1A is optional or mandatory? Optional, sir. Kindly use the chat, beta. Kindly use the chat, because otherwise
So all the participant can answer in the chat. Otherwise क्या होगा, जैसे आप अगर आंसर कर देंगे ना तो दूसरों के पास स्कोप खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, एनी पार्टिसिपेंट, if you have any question you can unmute, but if you like to give me the answer always use the chat, ठीक है बेटा। It is optional or mandatory. Answer is optional. Now if I say what is the benefit of the GSTR-1A and what is the loss of the GSTR-1A, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसे नॉर्मल पूछा मैंने, इट कम्स टू माय माइंड, टेल मी बेनिफिट ऑफ द GSTR-1A and the loss of the GSTR-1. See, it does not have any relevance from academic point of view. ये क्वेश्चन का कोई एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है, बट इट ओनली gives the benefit or confirmation about your understanding with the GSTR-1A. If I'll say what is the loss, you may say the benefit to the supplier or recipient or loss to the supplier or recipient, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, there is no issue. But tell me, yes, हेमंत काफी अच्छा ट्राई किया आपने, बहुत बढ़िया बेटा, very nice. Okay, what about rest of the participant? What is the benefit of the GSTR-1A and what would be the loss of GSTR-1A and to which party? Benefit किसको है और loss किसको है? Benefit, will it be supplier or recipient? Loss, will it be supplier or recipient? Waiting from other participant. Benefit किसको है? The benefit would be to the supplier. Sir, what is the benefit? What is the benefit to the supplier? The benefit to the supplier is that he can save the interest. How he can save the interest? Suppose if any transaction is missed in the GSTR-1 or incorrectly reported in the GSTR-1. Let's say invoice was of 10,000 but he has reported only 1,000. He has the option to correct the same and then save the interest at least. Now, as of now, the GSTR-3B is editable. You might say that sir, we can correct in the GSTR-3B. For the time being, please not bring the concept of the 3B for the time being. The biggest advantage would be, and also we all know that recently the government has issued one GSTN has issued one advisory that they will probably lock the 3B from the liability perspective. And what is the loss? I can say loss will be to the recipient. What would be the loss to the recipient? Why there is a loss to the recipient? Because suppose if there is any transaction is added in the GSTR-1A, it will go to the next 2B. So his ITC will not be available in same month, whose ITC entitlement would be available in the next month. Do you agree with this? Very nice, Eman. Absolutely correct. Clear हुआ ये वाला बात? Now let's move to the concept of QRMP, quarterly return and monthly payment. Now let me explain the concept of QRMP. अभी हम लोग start ही नहीं किया हमने discussion. We haven't started the discussion at all. I'm just trying to create the foundation. I'm just trying to create the foundation for all of the participant. So once you have developed the basic understanding, you will easily catch all the discussion. In case of regular category of the taxpayer, in case of regular category of the taxpayer, supplier, in case of regular category of the taxpayer,
if his turnover does not exceed, I'm using the just not less than, if his turnover does not exceed, you should use this, I hope. अगर उसकी टर्नओवर एक्सीड नहीं करती है कितने अमाउंट तक, if his turnover is up to 5 crore, then he has the option to opt for QRMP. Is there any option? Yes, point to be noted, it is an option, meaning thereby even my turnover is up to 5 crore, but can I go for monthly? Answer is yes. Because QRMP is an optional facility which if the taxpayer want, he can opt. No problem. But if still he like to go for monthly, he can. What is the QRMP? In case of the QRMP, the taxpayer. So in case of the QRMP, quarter means month 1, month 2, and month 3. So I'm using M1, M2, and M3. Try to understand. The written GSTR-1 and GSTR-3B would be filed only after the end of the quarter, 13th, after the end of the quarter, after the quarter, and 22 or 24 after the end of the quarter. ठीक है. But he has the option of IFF. What is the IFF? It is Invoice Furnishing Facility. It is Invoice Furnishing Facility. It is only for B2B. Month 1 and month 2, he has the option to furnish the B2B supply. What is the meaning of B2B? Registered to registered. So if I am making the sale to registered party, I have the option to report in the IFF. But if I have made the sale to unregistered party, no, I do not have any option. But PMT06 for making the payment, it is mandatory to pay the tax to the government on 25th of next month in cash. QRMP is monthly payment quarterly return. We'll go into the deeper part of QRMP. Just wait for some time. You will have the couple of questions. Just allow me 10-15 minutes so that I can complete the basic discussion for the QRMP and then you can ask any question. QRMP का पूरा नाम क्या है? मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ. QRMP का पूरा नाम क्या है? Just write in the chat. Just write in the chat what is the full name of the QRMP. Just write in the chat what is the full name of the QRMP. Quarterly return and monthly payment. So quarterly return, which are the return which is to be furnished quarterly basis? Can you tell me कौन से रिटर्न वो क्वार्टरली फाइल करेगा? एक बार आप स्लाइड को देखिए एंड देन गिव मी द आंसर. यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग. कौन से रिटर्न वो क्वार्टरली फाइल करेगा? इस चार्ट को देखिए एंड देन टेल मी which return he will file on quarterly.
GSTR-1 and GSTR-3B. Payment, it is written as monthly payment. It is written monthly payment. Can you tell me by which he will pay the tax on monthly basis? By which form he will pay the tax on monthly basis? See the chart, see the slide, and then give the answer. No problem. But एक बार देख के आप मुझे आंसर दीजिए. It will help to understand the concept of QRMP. एक बार देख के बताइए ना. एक बार देख के बताइए कौन सा फॉर्म यूज करके वो टैक्स का पेमेंट करेगा. Yes, it will be the PMT 06. See the chart and tell me what is the due date of the GSTR-1 for QRMP. What is the due date of the GSTR-1 for the QRMP? GSTR-1 का ड्यू डेट क्या है फॉर QRMP? It is 13th after the end of the quarter. And what is the due date of the GSTR-3B for QRMP? What is the due date of the GSTR-3B for QRMP? Answer is 22 या 24 after the end of the quarter. What is 25th? What is 25th? What is 25th? What is 25th? Payment of taxage. अभी हम और बात करेंगे. We'll talk much more. We'll talk much more. Now see, अब एक बात करते हैं. चलो अब एक बात करते हैं. Let's say I am a supplier. My turnover is up to 5 crore. I have opted QRMP. ठीक है. Try to understand. मैं अब आपको बता रहा हूं why IFF has been introduced. What is the requirement to bring the IFF? That I am telling to you. I am a small supplier. Therefore, I have opted QRMP. Now, let's say you are my customer. You are filing monthly. Is it possible that quarterly supplier can make the sale to the monthly supplier, monthly taxpayer? ये okay है ना, ये possible है ना कि quarterly supplier can make the sale to the monthly recipient? ये possible तो है या ये possible नहीं है? It is not possible. It is possible. Very simple ना. Possible है. Now think about. Assume that there is no other return. I am filing the 1 and 3B. I will file, let's say there is only one return, GSTR-1 and 3B. I will file GSTR-1 on monthly basis or quarterly basis. Assume I am under QRMP, तो मैं अपना GSTR-1 कब फाइल करूंगा? If I am under QRMP, by when I will file my GSTR-1? On quarterly basis. तो assume करो मैंने जो मंथ 1 में जो सेल किया आपको वो मैं क्वार्टर खत्म होने के बाद रिपोर्ट करूंगा. एम आई राइट? सपोज आई हैव द ओनली ऑप्शन ऑफ द GSTR-1, तो जो मैंने आपको मंथ 1 में सेल किया GSTR-1, मंथ 1 में सेल किया उसको GSTR-1 में कब दिखाऊंगा? 3 महीने बाद में. ये आपकी 2B में कब अपीयर होगा? व्हेन दिस ट्रांजेक्शन विल अपीयर इन योर 2B, मंथली या क्वार्टरली? आपकी 2B में मेरी ये सेल, मैंने जो ये सेल बताई है, व्हेन इट विल अपीयर इन योर GSTR-2B after 3 months. You can take the ITC only after 3 months. Do you agree with this? You can take the ITC after 3 months. You can take the ITC after 3 months. You will not do the business with me. You will not do the business with me. आप जब मैं why you are saying ओझा, जीनी, why you are saying no? सर एक्चुअली वो पहले मैंने आपने जो बोला था ना अभी कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा यानी 3 महीने के बाद, उसके लिए मैंने नो यूज किया. ठीक है बेटा, ठीक है. अब मैं क्या कह रहा हूं, आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, आपको 3 महीने बाद मिलेगा. आपने तो परचेज आज की है, यू मेड द पेमेंट टू मी, but you are taking the ITC, you are eligible to take the ITC after 3 months, you will stop the business with me. You will not have any interest to do the business with me because you are having the loss for 3 months. Therefore, there is a requirement. Therefore, there is a requirement to bring the concept of some type of the statement by which QRMP taxpayer
can report B2B supplier monthly, by which recipient able to see in the same month to be, और same month की to be माने से क्या फायदा होगा? He can take the ITC in the same month. Agreed? क्लियर है कि वाई IFF आया? IFF इसलिए आया ताकि QRMP टैक्स पेयर के कोई अगर रजिस्टर्ड सेल है तो उन्हें मंथली बेसिस पर रिपोर्ट कर सके, बाय विच मंथली टैक्स पेयर कैन अवेल द ITC इन द सेम मंथ. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अभी क्या हुआ? QRMP टैक्स पेयर, let's assume that there is a sale of rupees 100 and there is an ITC, or there is a purchase. Let's say there is a purchase of rupees 80. There is a purchase of rupees 80. Now see, month 1, month 2 and month 3. Month 1, month 2, month 3. He has reported 100 rupees ka sale. Reported 100 rupees ka sale, and on quarter 3 he has also 100 rupees ka sale. So the total sale is 300. On every month he has the sale of rupees 100. In every month he has rupees 80 ka purchase. But whether he will file the GSTR-3B on monthly basis? No, he will file 3B on quarterly basis, and in which he will report 40 ka ITC. 240 ka ITC. Question comes, when he will pay the tax to the government for month 1, will he pay 100 rupees or will he pay rupees 20? Month 1 की बात करता हूं तो ये टैक्स कितना पे करेगा? Will he pay the tax rupees 100 or will he pay the tax rupees 20? Because why the question comes, try to understand. Because he has some form, he has some statement in which he is reporting the same, but he does not have any GSTR-3B or any other concept by which he can take the ITC on monthly basis. No. Still the government is saying, you calculate on your self basis what is the gross liability, what is the ITC, and how much you need to pay the same in cash. You calculate. There is no requirement to furnish any return for taking the ITC, but you calculate. So I am QRMP taxpayer. I have reported my total sale of rupees 100. Let's say out of 100, let's say 80 rupees are B2B and 20 rupees are B2C because unregistered. So my total sale is 100 and my ITC is 80. Then how much amount I will pay? I will pay rupees 20. I will pay rupees 20. Even though I do not have any statement for reporting the ITC, but still the tax, how much I need to pay, for that I can do the calculation that 100 minus 80 is equal to 20. Rupees 20 I will pay through cash by PMT 06. This method is called as self-assessment method. Self-assessment method. What is the self? क्या इसका यूज है? Self-assessment method is being used to calculate how much tax need to be paid to the government on monthly basis of our M1 and M2. There is one more concept of fixed sum method. There is one more concept of fixed sum method. There is one more concept of fixed sum method. इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज है? गवर्नमेंट ने ये कहा, you are not required to worry at all because you are QRMP. You are very small taxpayer. Your total turnover is up to 5 crore. You are a small taxpayer. So I am giving you the formula by which you calculate the tax liability and pay the same. Irrespective of actual, उन्होंने बोला कि आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो. तो in this method, which method?
fix sum method. Fix sum method. They are simply saying go to the previous quarter. Let's say I'm standing in the January to March quarter. I'm standing in the month of January to March quarter, right? अभी आज फरवरी चल रहा है. Let's say I'm QRMP taxpayer. Then on 25th, I will pay the tax of January. Do you agree with me? I will pay the tax for the month of January. Do you agree with this? अब एज्यूम करो मैं QRMP टैक्स पेयर हूं, तो 25 फरवरी को मैं जनवरी का टैक्स पे करूंगा ना पे एक टैक्स. एक मिनट दीजिए. जब मैं 25th को जब मैं टैक्स पे करूंगा, तो I have one method which is self-assessment method. I will calculate actual tax liability. Otherwise, the government is giving me one option that go to the fixed sum method. What is that? Previous quarter क्या था? October to December. इस क्वार्टर में आपका जो मेथड था, whether you were under QRMP or you are under monthly. So whether you are under QRMP or you are under monthly. Let's say you are under QRMP. अगर आप QRMP में थे, then उस GSTR-3B में कितना अमाउंट आपने कैश में पे किया था, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 35%. Suppose this you are under QRMP, then this 3B would represent the liability for 1 month or this 3B would represent the liability for 3 months. एक बार सोच के बताइए कि यहां पर जो 3B आपने फाइल किया है लास्ट क्वार्टर, जिसमें भी आप अंडर QRMP थे, have you furnished the 3B for 1 month or showing the liability of ITC or payment of tax for entire quarter? The answer is entire quarter. Absolutely correct बेटा, entire quarter. तो यहां पर जितना भी कैश पे किया है, that is basically for 3 month. तो इसमें 35 क्यों का 35? बेसिकली हम जानते हैं सर, 100 रुपए अगर मैं पे करता हूं तो इसका 1/3 क्या है? एक महीना ना. 1/3 is 33.33% ना. What is the 1/3? 33.33% को राउंड ऑफ कर दिया. Simply they have rounded off. So they are saying multiply by 35%. This much of the amount you have to pay for M1. Same amount you will pay for M2. No problem. Whether it is below or above, you are less to bother. Interest will not be leviable on you. अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस क्वार्टर तो मैंने QRMP सेलेक्ट किया, बट लास्ट क्वार्टर में वो टैक्स पेयर मंथली में था. क्या QRMP मंथ एवरी क्वार्टर चेंज कर सकते हैं? जी सर. देयर इज ए टाइम विंडो व्हिच आई विल डिस्कस विद यू, in which you can change the frequency. Assume that in the December month, you were under monthly scheme, you filed the GSTR-3B on monthly basis. You have furnished the GSTR-3B on monthly basis. Tell me, जितना मैंने उसमें liability पे किया है, will it be for 1 month or will it be for 3 months? जितना भी लाइबिलिटी मैंने उसमें पे किया है, will it be for 1 month or will it be for 3 month? आंसर इज 1 month. तो इन्होंने क्या कहा फिक्स मेथड में? मल्टीप्लाई बाय 100%. इसका मतलब जितना लाइबिलिटी, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, कैश में पे किया है, इतना लाइबिलिटी आपने कैश में पे किया है, उतना का उतना अमाउंट आप M1 में पे कर दीजिए और उतना का उतना अमाउंट आप M2 में पे कर दीजिए. इग्नोर दी एक्चुअल सेल. लेट्स से इस लास्ट मंथ का, दिसंबर मंथ का मेरा GSTR-3B नील था. मंथ 1 कितना टैक्स पे करना है? नो. मंथ 2 कितना टैक्स पे करना है? नो. इवन तो आई हैव सेल, यस. गवर्नमेंट ने मुझे एक मेथड दिया है विच आई कैन यूज टू, वो मेथड दिया जो मैं यूज कर सकता हूं
the method that they have given, which I can use for making the payment under QRMP. अभी 10 मिनट 5 मिनट अभी समझ में आ रहा है ना? जस्ट टेल मी. मैंने कहा ना मिताली, अगर आपकी सेल 0 है और इस बार आपकी सेल लेट से 100 रुपीज है, तो भी आपको टैक्स नहीं पे करना. लास्ट टाइम 100 रुपए था, इस बार कोई सेल नहीं है, 0 है, तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप ये फिक्स सम मेथड में जाएंगे. नाउ इन दिस केस व्हाट यू विल डू, let's say you are chartered accountant and you are filing the return of your consult taxpayer client, then you will not use fixed sum method. In this case you will go to the self assessment method. So that is also an option. You can change the FSM or self assessment method also. There is no कि एक बार अगर आपने एक मेथड चूज कर लिया सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए वो सेम मेथड चूज करना है. नो, सब्सिक्वेंट क्वार्टर के लिए मतलब. ठीक है ना? अभी आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा? काफी हद तक क्लियर हो गया ना? सर सेम क्वार्टर में वी हैव टू फॉलो द सेम मेथड. हाँ, एम आई राइट सर? करेक्ट. ओके. अभी अगेन आई एम सेइंग आई हैव नॉट रेड any of the law, I have not read any of the text. मैंने सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कुछ चीजें बताई है. अभी चीजें मोरलेस 90% ओके है, बट हो सकता है अपने को 10% चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज लैंग्वेज जब हम रीड करेंगे तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग में, जैसे मैं बार बार GSTR-1 को रिटर्न कहता हूं, बट जब मैं लॉ की लैंग्वेज पढ़ूंगा इट इज नॉट द रिटर्न, इट इज एन स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाई. ठीक है? तो ये थोड़े बहुत अपने को चेंजेस करना पड़ेगा व्हेंस आई विल रीड द एक्चुअल लैंग्वेज. बट अभी तक सभी को समझ में आया ना? टिल नाउ यू सर IFF आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड सर. तो आप उस टाइम लॉग आउट हो गए थे इसलिए आप नहीं समझ पाए. करेक्ट सर, करेक्ट. वॉच द वीडियो अगेन, इट विल बी अवेलेबल. टू वॉच द वीडियो इट विल, बिकॉज जितनी टाइम तक आप आउट थे ना उसी टाइम पे मैंने IFF का डिस्कशन किया, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली. ठीक है? अब एक बार बात करते हैं, चलो थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. ठीक है? आप मुझे चैट पे आंसर देना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग एक्टिवली आंसर देना, वेदर यू डू करेक्ट और इनकरेक्ट इमैटेरियल, बट ट्राई टू आंसर. GSTR-1 and 3B, it would be available to the monthly or quarterly. Sorry, it would be available to the regular taxpayer, or it would be available to the composition taxpayer, or it would be available to the TDS, TCS. GSTR-1 और 3B किस टैक्स पेयर को फाइल करना है? रेगुलर को फाइल करना है, कंपोजिशन को फाइल करना है, या किसको फाइल करना है? रेगुलर टैक्स पेयर. मैं ब्रेक थोड़ा सा बाद में लूंगा बिकॉज अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं. ठीक है ना? नॉर्मली आई यूज टू टेक द ब्रेक एट 7 o'clock, बट आज मैं ब्रेक थोड़ा सा बाद में लूंगा. इज इट ओके? इज इट ओके? एक बार कंफर्म करो चैट पर. ठीक है बेटा. अभी मुझे एक चीज और बताइए आप लोग. इन केस ऑफ QRMP टैक्स पेयर, इन केस ऑफ QRMP स्कीम, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द टर्नओवर जो QRMP ऑप्ट कर सकता है? कितनी लिमिट होनी चाहिए, कितनी टर्नओवर होनी चाहिए तो मैं QRMP में जा सकता हूं? इट इज वेरी सिंपल. इट इज वेरी सिंपल दैट 5 करोड़. ठीक है? आई हैव द टर्नओवर ऑफ 4 करोड़. कैन आई गो फॉर मंथली इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली? कैन आई गो फॉर मंथली इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली? अगर मेरी टर्नओवर लेट से 4 करोड़ है, कैन आई गो फॉर मंथली इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली? Absolutely yes. It is an optional. QRMP is an optional. In the QRMP, GSTR-1 and 3B would be filed M1, M2 or after the end of the quarter. GSTR-1 and 3B मुझे एवरी मंथ फाइल करना है अंडर QRMP या क्वार्टर खत्म होने के बाद? आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर. आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर मिताली, क्योंकि नाम इसका QRMP है ना, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट. सो
If I am under QRMP, I will file the 1 and 3B on quarterly basis for M1, by which form I will report my outward supplies. वो कौन सा फॉर्म है जिसके माध्यम से मैं अपनी सेल बताऊंगा? फॉर M1, फॉर M2. कौन सा फॉर्म है QRMP के लिए? अभी आपने कहा GSTR-1 and GSTR-3B would be filed on quarterly basis. Absolutely correct. Now for M1 and M2, by which form QRMP taxpayer will report the sale? QRMP taxpayer who has opted the QRMP file the GSTR-1 after the end of the quarter. तो M1 और M2 में किस फॉर्म के माध्यम से वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई बताएंगे? आंसर इज IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. टेल मी वन थिंग. नो हेमंत बेटा ये कंपोजिशन के लिए CMP 8 तो जो चीज आप नहीं समझे वही क्वेश्चन था मेरा. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि IFF में मैं रिपोर्ट करूंगा. विल आई रिपोर्ट माई B2B सप्लाई, will I report my B2C supply unregistered, or will I report my all supplies? IFF, invoice furnishing facility, will I report B2B supply, will I report B2C supply, will I report all supplies? The answer is only B2B. Only B2B. Absolutely correct. All the participants. यहाँ पे भी और उधर आशुतोष and everyone is correct. Very nice, very nice. तो मैं B2B सप्लाई को यहां पर रिपोर्ट करूंगा. What is the due date for IFF? What is the due date for IFF? 13th, after the end of the month. For M1, 13th. For M2, 13th. Try to understand. IFF is an optional facility. It is not mandatory. But this option is available till 13th. मतलब अभी सपोज मैं QRMP हूं तो जनवरी का जो मेरा B2B का सेल है, I will report in the February by 13th. If I will report by 13th, no problem. Otherwise, I will not be able to report the supply or able to file the IFF. याद रखना, नया पॉइंट बता रहा हूं. IFF is available. IFF is available till 13th, and you can add the sale up to rupees 50 lakhs. एक IFF. सॉरी बेटा सर, अगर इन केस 1 मंथ के लिए मिस हो गया हमारी IFF, तो सेकेंड मंथ में हम दोनों की कर सकते हैं. हाँ, कंसोलिडेट डाल सकते हैं आप. ओके सर. बट पॉइंट टू बी नोटेड, द टोटल वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 50 लाख इन वन IFF. उन्होंने अपर कैप कर दिया कि 50 लाख तक की वैल्यू को डाल सकते हो. सर 50 से ज्यादा तो क्या कर, आप यू हैव टू ऐड इन द GSTR-1. ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट लगा दी कि 13 तक फाइल कर सकते हो. यहाँ पे अपर लिमिट लगा दी वैल्यू की कि दैट मैक्सिमम यू कैन ऐड अप टू ₹50 लाख. अगर उससे ज्यादा है आप नेक्स्ट GSTR-1 में आप ऐड कर सकते हो. वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो लिमिट. If I have the B2C supply, can I add in the IFF, or I have to file in the, or I have to add in the GSTR-1? Please tell me in the chat that if I have the B2C supply, can I add in the IFF? Can I add in the IFF, or no? No, I can't add. I have to add in the GSTR-1 after the end of the quarter. Fine. ओके बेटा, एक बात मुझे बताइए, 1A से ITC सेम मंथ में मिलता है कि नेक्स्ट मंथ में मिलता है? 1A से ITC सेम मंथ में मिलता है कि नेक्स्ट मंथ में मिलता है? आंसर इज नेक्स्ट मंथ. IFF से ITC सेम मंथ में मिलता है कि नेक्स्ट मंथ से मिलता है? मिताली नेक्स्ट मंथ है. मिताली प्लीज नोट, 1A से जो भी आप ट्रांजेक्शन ऐड करोगे ना, उससे नेक्स्ट मंथ में ITC मिलेगा कस्टमर को. माय क्वेश्चन इज, IFF से ITC सेम मंथ में मिलता है या नेक्स्ट मंथ में मिलता है? सेम मंथ में. एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा.
What is the due date for QRMP taxpayer to pay the tax for M1 and M2? What is the due date for QRMP taxpayer to pay the tax for M1 and M2? Right. 25th of next month. 25th of next month. Absolutely correct, beta. Tell me one thing. There are two methods to calculate the liability under QRMP. There are two methods to calculate the liability under QRMP. Can you tell me the name of these two methods? Can you tell me name of these two methods? आशुतोष, मैंने ना जी आपने जो ड्यू डेट बताया वो 3B का ड्यू डेट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट माय क्वेश्चन वाज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, सो द आंसर विल बी 25th. एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने 3B का ड्यू डेट बताया, बहुत सही है, बट मेरा क्वेश्चन पेमेंट ऑफ टैक्स के रिगार्ड में था जिसका ड्यू डेट 25 है. फिक्स सम मेथड, दो मेथड कौन से थे? एक तो फिक्स सम मेथड था, दूसरा था सेल्फ असेसमेंट मेथड. इन द फिक्स सम मेथड it is based on the prior period, previous quarter. अगर प्रीवियस क्वार्टर में QRMP में था तो मैं M1 में कितना लाइबिलिटी पे करूंगा? हाउ मच लाइबिलिटी आई विल पे इफ द प्रीवियस frequency or the previous means I can say the quarter का frequency is also under QRMP, तो मुझे कितना पे करना है? 35%. Now tell me, very important question, 35% मैं क्रॉस लाइबिलिटी का कैलकुलेट करूंगा या कैश, जितना कैश पे किया उसका कैलकुलेट करूंगा? 35% आई विल कैलकुलेट ऑफ क्रॉस लाइबिलिटी ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर और लाइबिलिटी विच इज बीइंग डिस्चार्ज इन कैश उसका कैलकुलेट करूंगा. 35% विल बी कैलकुलेटेड ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी या नेट लाइबिलिटी जो कैश में पे हुई है? आंसर इज नेट लाइबिलिटी जो कैश में पे हुई है. प्लीज नोट, मैं ग्रॉस लाइबिलिटी का नहीं करूंगा, मैं नेट लाइबिलिटी का करूंगा जो कैश में पे है, क्योंकि मुझे सिर्फ कैश में ही पे करना है. ठीक है बेटा. सो नाउ आई थिंक इट इज ओके, लेट्स टेक ए ब्रेक ऑफ 15 मिनट. हम लोग रिज्यूम करेंगे 7:30 पर एंड उसके बाद में कोई ब्रेक नहीं लेंगे. वी विल नॉट टेक एनी फर्दर ब्रेक. वी विल रिज्यूम एट 7:30. विल अवॉइड एनी फर्दर ब्रेक. 15 मिनट का आप एक बार ब्रेक ले लीजिए एंड देन वी स्टार्ट द डिस्कशन. अब उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द लॉ. ठीक है अशोक जी, अजीत जी.
स्टार्ट करूं? ठीक है, थैंक यू. So I have tried to develop the concept about the GST returns. Now let me go to the study material and the things if I have missed. Okay. Who is required to file the details of outward supply? I can say the person who is regular taxpayer. It means the person, if you have registered under the input service distributor, you will not file the GSTR-1 because you will file the GSTR-6. If you are NRTP, you will not file the R1, you will file the GSTR-5A. Or if you are composition taxpayer, you will not file the GSTR-1, you will file the CMP-8 and GSTR-4. Correct. Then they are saying that deduction at source, TCS. If TCS person is there, they will file the GSTR-8, TDS, GSTR-7, and OIDAR and online money gaming will file the GSTR-5. Because these are the specific category of the taxpayer, they will file the specific return. So apart from the taxpayer who is left, only regular category of the taxpayer, they will file the GSTR-1. Please note, casual taxable person. Casual tax. Have you heard this name? Casual taxable person. Have you heard this name? Casual taxable person. आपने कभी नाम सुना है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का? क्या होता है ये? क्या होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? जो जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो किसी अदर प्लेस पे जाता है जहां पे उसका कोई परमानेंट प्लेस और वहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है. Yes, we have already discussed in detail in the registration chapter. So my point is, if you are casual taxable person, then you will file the GSTR-1 and the GSTR-3B. Point to be noted, in case of CTP, casual taxable person, they have not excluded. Why? Because they will also file the same return which is of regular category of the taxpayer. ठीक है, अभी और आते हैं हम लोग. GSTR-1 है फॉर्म नंबर. ड्यू डेट क्या है? मंथली या क्वार्टरली है? ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट लॉ में 10th लिखिए, बट दे हैव गिवन द पावर ऑफ द extending the due date to the commissioner. So the time limit has been extended for regular category of the taxpayer who has opted QRMP scheme. Then what is the due date? 13. Will it be monthly? No, it will be after succeeding the quarter. And if you are other means monthly, then what would be the due date of the GSTR-1? It will be 11th. Correct? Quickly tell me, who will file IFF, monthly or QRMP? Please tell me, who will file IFF, invoice furnishing facility? कौन file करेगा, monthly या quarterly? Who will file the IFF, monthly or quarterly? Answer is quarterly. What is the upper limit of the value we can report Hemant quarterly or monthly? What is the IFF? Who will file the IFF? Answer was the person who has opted QRMP scheme. They will file IFF for month 1 and month 2. कितनी लिमिट की सेल मैं दिखा सकता हूं? What is the upper limit which I can add in the IFF? 50 lakhs is the upper limit. Correct, 50 lakhs. B2B, B2C or both? Which type of the transaction I can add in the IFF? B2B, B2C or both? B2B or B2C or both? The answer is B2B. Absolutely correct. Absolutely correct. So these things would be added. Let's see. Invoice furnishing facility is a facility provided to the QRMP scheme to file the details in the first 2 months of the quarter. What is the benefit? To pass the credit to the recipient. IFF is optional, not mandatory. Okay. Registered person may choose to furnish the details in the GSTR-1 only instead of IFF. Okay, no problem. Now,
I will explain either today or I will explain tomorrow what is the difference between 2A and 2B in detail. But just basic idea I'm telling right now. Just one basic idea I'm telling right now. If I am talking about, let's say, December 24 GSTR-1, if it is furnished by the due date, then it will appear in the GSTR-2B of the same month or next month. Give me the answer. If my supplier has filed the GSTR-1 by the due date, it will appear in the same month GSTR-2B or next month GSTR-2B. Answer is same month to be. If the GSTR-1 has been filed after the due date, then will it appear in the same month to be or will it appear in the next month to be? Answer is next month. So same month means I can say December 24 to be. Same month means I can say December 24 to be. Next month means I'm saying January 24, January 25 to be. But please note 2A. Please note 2A. Whether the supplier will file by the due date or after the due date. In all the cases, it will appear in the GSTR-2A in the same month. In the GSTR-2A in the same month only. So therefore, if I will go in the law prior to December, I can say this date. Not required to remember the date, but just I'm telling to you. Prior to this date, ITC was to be taken on the basis of 2A. Now they have shifted the ITC to be taken on the basis of 2B. Correct? क्या डिफरेंस है 2A 2B में? सबसे बड़ा डिफरेंस यही है 2A जिस महीने का जिस टैक्स पीरियड का GSTR-1 है उसी टैक्स पीरियड के GSTR-2A में वो ट्रांजैक्शन अपडेट होगा irrespective of the filing of R1 by the supplier, whether it is furnished before or after the due date, it is immaterial. कभी भी फाइल करेगा सप्लायर तो वो 2A उसी मंथ में जाके वो ट्रांजेक्शन ऐड होगा. लेकिन 2B में क्या है, अगर ड्यू डेट तक GSTR-1 फाइल कर दिया तो ये उसी मंथ की 2B में वो ट्रांजेक्शन ऐड होगा, और अगर आफ्टर द ड्यू डेट फाइल किया है सप्लायर ने तो ये नेक्स्ट मंथ की 2B में वो इनवॉइस आएगा. व्हाट इज द लॉस? अगर सप्लायर GSTR-1 आफ्टर द ड्यू डेट फाइल करता है, व्हाट इज द लॉस टू द रिसिपिएंट? What is the loss to the recipient? What is the loss to the recipient? Answer is the loss would be ITC defer हो जाएगा. एक महीने ITC, उस महीने ITC नहीं मिलेगा because it can't take the ITC till the time it is not appearing in the GSTR-2B. Now, what is the 4A? What is the 6A? Let me tell you. Suppose I am the supplier and you are my customer. I am the supplier and you are my customer. I am registered in the category. If I'm registered in the regular category, can I make the sale to the composition taxpayer? Can I make the sale to the composition taxpayer now? See, I can make the sale to any person. I can make the sale to any person. It is immaterial. I can make the sale to any person. So now try to understand, if the supplier who is registered under regular category filing the GSTR-1, sales made to the regular category of the taxpayer, तो
वो ट्रांजेक्शन उसके GSTR 2A में आएगा एज वेल एज 2B में आएगा। वो कौन से मंथ के 2A में आएगा, कौन से मंथ के 2B में आएगा, दैट वी हैव डिस्कस्ड, बट इट विल अपीयर in the 2A as well as 2B. If supplier who is registered under regular category filing the GSTR1 by reporting the sales made to the composition taxpayer, then composition does not have 2A to B, it will have the GSTR 4A. 4A is exactly same concept of 2A to B. Only point that he can see, composition taxpayer can see the inward supply. सेम अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उसको अगर सेल दिखाई है, देन ISD कैन सी द डिटेल्स इन द GSTR 6A. आई होप इट इज क्लियर. अगर रेगुलर कैटेगरी का टैक्स पेयर है जिसने रेगुलर कैटेगरी को सेल किया है, ही विल एबल टू सी द प्राइस इन द 2A to B. कंपोजिशन टैक्स पेयर को सेल किया है तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन कैन एबल टू सी द purchase in 4A and ISD can see the purchase in the 6A. ठीक है, क्लियर है ना? क्विकली बताना, what is the due date for QRMP taxpayer to pay the tax? क्विकली बताना, what is the due date for making the payment of tax by the QRMP? What is the 25th of next month? Tell me one thing, very important question, very latest question, new question. QRMP taxpayer for third month, what is the due date for payment of tax? For third month, what is the due date for payment of tax? QRMP taxpayer who is filing the GSTR 3B on quarterly basis, what is the due date for payment of tax? Always remember बेटा, अगर 3B है तो ड्यू डेट ऑफ 3B. मुझे बताइए QRMP टैक्स पेयर M1 में 3B फाइल करता है? क्या M1 में 3B फाइल करता है QRMP टैक्स पेयर? नो. देन व्हाट इज द ड्यू डेट? 25th. M2 में भी 3B फाइल करता है क्या वो? M2 में 3B फाइल करता है? नहीं. तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स 25th. M3 में 3B फाइल करता है? M3 में क्या 3B फाइल करता है? देन इट इज द 3B का डेट. 3B का डेट ऑफ फाइलिंग नहीं, ड्यू डेट. 3B का ड्यू डेट क्या है? 3B का ड्यू डेट 22 या 24. करेक्ट. अगर मंथली टैक्स पेयर है, इन केस ऑफ मंथली टैक्स पेयर, द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ड्यू डेट क्या है पेमेंट ऑफ टैक्स की? क्या मंथली टैक्स पेयर 3B मंथली फाइल करता है क्वार्टरली? क्या मंथली टैक्स पेयर 3B मंथली फाइल करता है क्वार्टरली? आंसर इज मंथली. तो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ मंथली टैक्स पेयर? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द GSTR 3B फॉर मंथली टैक्स पेयर? क्या है ड्यू डेट? 20, 28th. Then this 20th would be the due date of 3B as well as due date of payment of tax. ठीक है. The invoice are to be furnished in IFF till the 13th of the succeeding month. After 13, this facility is not available. ठीक है. Point to be noted,
M1 में जो आपने डिटेल्स ऑलरेडी IFF में बता दी, M2 में जो डिटेल्स आपने IFF में बता दी, ठीक है, यू माइट हैव रिपोर्टेड सम आउटवर्ड सप्लाई इन M1 M2. जब GSTR1 फाइल करेंगे, then you will not add this in the GSTR1. जो डिटेल्स आपने, एक बार रुकिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको. लेट्स से in the M1 I have reported the sale of 20. My total quarter का sale was, let's say, 100 rupees. In M2 I have reported the sale of 30. Now in the GSTR1, will I report the entire 100 का sale or I will report the balance sale? The answer is this you will not add. So it means in the GSTR1 you will report the 50 rupees का sale. In the GSTR-3B, which you are filing for only after the end of the quarter, how much you will report? Will you report 100 or will you report 50? Answer is यहां पर आपने M1 में कोई 3B फाइल किया था? नहीं. क्या M2 में 3B फाइल किया था? नहीं. तो 3B तो एक ही जा रहा है ना क्वार्टर का. यू आर रिपोर्टिंग 3B ओनली वंस ना. तो यहां पर आप टोटल सेल बताओगे, टोटल सेल बताओगे, which will be nothing but the addition of IFF M1, IFF M2 and then GSTR1. One more point, let me explain. IFF M1 को फाइल किया, M1, M2, M3. यहां पर उसने IFF फाइल किया, यहां पर उसने IFF फाइल किया, ठीक है. यहां पर कुछ डिटेल्स गलत हो गई. लेट्स से यहां पर कोई डिटेल्स उसने गलत डाल दी या कुछ छूट गई. कैन ही ऐड इन द GSTR1A for M2? Can he add in the GSTR1A for M2? Can he add in the GSTR1A for M2? Please note, new point I'm telling to you. Please note, M1 and M2 1A is not available for quarterly taxpayer. मुझे एक बात बताइए, हमने GSTR1A का क्या कंडीशन पढ़ा था? We have discussed that 1A will be open only after the below two dates. हमने ये डिस्कस किया था कि 1A would be available after the two dates. क्या डिस्कस किया था? कैन यू टेल मी? हमने 2 डेट के बारे में बात की कि GSTR1A would be available after this date, whichever is later. मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको. आफ्टर ड्यू डेट क्या? आफ्टर ड्यू डेट ऑफ IFF, आफ्टर ड्यू डेट ऑफ GSTR5, आफ्टर ड्यू डेट ऑफ 3B क्या? मैं तो सभी से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं. क्या पढ़ा था आपने GSTR1A के रिकॉर्ड में? सर GSTR1A के रिकॉर्ड में पढ़ा था ड्यू डेट ऑफ R1, एक्चुअल फाइलिंग डेट ऑफ R1, whichever is later. अब मुझे बताइए, क्या आप M1 में R1 GSTR1 फाइल करते हैं? नहीं. M2 में GSTR1 फाइल करते हैं? नहीं. GSTR1 कब फाइल करते हैं? M3 में. तो प्लीज नोट, in case of the QRMP taxpayer, GSTR1A would be available only for quarter, not for M1 and M2. किसी ने GSTR1 for the QRMP taxpayer I'm talking about, if the GSTR1 has been filed on 10th, please tell me start date of the GSTR1A for QRMP taxpayer. Kindly tell me the start date of GSTR1A
for QRMP taxpayer. Yes, you can correct M1 का भी और M2 का भी, पूरे क्वार्टर का आप करेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये बताइए ये GSTR-1A कब ओपन होगा, कौन सी तारीख को ओपन होगा, एग्जैक्ट डेट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कौन सी तारीख को वो GSTR-1A ओपन होगा फॉर QRMP taxpayer? Tell me by which date this QRMP taxpayer would be able to see the 1A on his portal. Assume that 10th of April, let's say we are talking about Jan to March quarter, 10th of April 2025, he has furnished the GSTR-1. एक बार वापस बताएंगे मुझे ड्यू डेट क्या होती है QRMP टैक्स पेयर की GSTR-1 की? ड्यू डेट क्या होती है GSTR-1 की फॉर QRMP टैक्स पेयर? 13th ना, 13th ना, तो 13 के पहले तो ओपन ही नहीं हो सकता. इट विल बी ओपन आफ्टर 13th. इट विल बी ओपन आफ्टर 13th और एक्चुअल फाइलिंग इट मींस 13th की मिडनाइट के बाद ओपन होगा. 13th की मिडनाइट के बाद ओपन होगा. ठीक है. We are learning very, very new things. I hope you are able to understand. GSTR-1. See, now try to understand that GST return is a sequential filing. Now I am adding the one word sequential filing. Sequential filing means you can file the GSTR-1 if last 3B has been filed. You can file the GSTR-1 if last GSTR-1 is filed. अगर आपने preceding GSTR-3B and preceding GSTR-1 फाइल किया है, then only you can file the current GSTR-1. इसने क्या कहा कि अगर आपने 3B फर्निश नहीं किया preceding month का, you cannot furnish the details of the outward supply in the GSTR-1. Same, अगर आपने QRMP ऑप्ट किया है तो आप GSTR-1 या IFF फर्निश नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड का. देखो, सबसे बेनिफिट होता है वर्ड टैक्स पीरियड, क्योंकि टैक्स पीरियड में क्या है, मंथली या क्वार्टरली दोनों कवर हो जाते हैं. इफ आई एम यूजिंग द वर्ड टैक्स पीरियड इट मींस फॉर मंथली इट इज मंथली और क्वार्टरली इट इज क्वार्टरली. टैक्स पीरियड मतलब if I am using for QRMP it means for quarter. समझिए कॉन्सेप्ट 88C और 88D क्या है. What is the concept of 88C and 88D? Now try to understand the concept. (88C) So मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज मैं फिर बाद में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा. एक मिनट दीजिए मुझे, मैं वापस वहीं चला जाता हूं. Then it would be better. What is 88C? एक बार कंफर्म करना. You are reporting the liability detail wise in which form? GSTR-1 or GSTR-3B? You are reporting the details of outward supply in which return? GSTR-1. And by which return you are paying the tax?
by which return you are paying the tax? GSTR-3B. As of now, please note, as of now, GSTR-3B is editable. GSTR-3B is editable. Suppose I have furnished the 10 crore ka sale in the GSTR1, but let's say I have edited and I am making the payment of tax only 10 lakh. मैंने सेल कितना बताया? टैक्स कंपोनेंट की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टैक्स कंपोनेंट. आई हैव रिपोर्टेड so much of the sale having the tax liability of 10 crore. I have reported the sale in the GSTR-3B only 10 lakh का liability. मैंने कितना liability गवर्नमेंट को पे किया है? Is it 10 crore or 10 lakh? How much liability I have paid to the government? The liability would be paid to the government through always 3B. The answer is 10 lakh. Answer is 10 lakh. कस्टमर मेरा जो रिसिपिएंट है उसको आईटीसी कितना विजिबल होगा? हाउ मच आईटीसी वुड बी एबल टू सी इन द GSTR-2B? विल इट बी 10 crore और विल इट बी 10 lakh? कितना आईटीसी मेरा कस्टमर देख पाएगा? हाउ मच आईटीसी वुड बी ही वुड बी एंटाइटल? एक बार प्लीज कंफर्म, रिसिपिएंट के 2B में डिटेल्स सप्लायर के GSTR-1 से जाएगी या सप्लायर के GSTR-3B से जाएगी? प्लीज कंफर्म द ट्रांजेक्शन इन द GSTR-2B विल अपीयर फ्रॉम सप्लायर GSTR-1 या सप्लायर GSTR-3B? आंसर इज सप्लायर GSTR-1. या तो गवर्नमेंट को बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा? मतलब गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है 10 lakh बट कस्टमर आईटीसी ले रहा है 10 crore. Is it possible loss to the government? Is it a possible loss to the government? Do you agree? Therefore, government has introduced Rule 88C. Therefore, government has introduced the Rule 88C. क्या कहता है Rule 88C? अगर GSTR-1 minus GSTR-3B, GSTR-1 माइनस GSTR-3B, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस अगर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा है, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है, दैट मे बी डिफरेंट. एज ऑफ नाउ इट इज 25 lakhs प्लस 20%, whichever is higher. मतलब ये अमाउंट डिफर होता जाएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली. ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ द लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन द R1, लाइबिलिटी पेड इन द, बात करूंगा हेमंत बात करूंगा इसमें, लाइबिलिटी पेड इन 3B मैं बात करूंगा. 2 मिनट दीजिए मिताली बेटा, 2 मिनट दीजिए. 20% ऑफ द लाइबिलिटी, 20% ऑफ लाइबिलिटी, R1 का लाइबिलिटी, R1 का लाइबिलिटी. डिफरेंस इज above from the prescribed amount, then the system itself, there is no human intervention, system itself will send the intimation to the taxpayer, either pay the tax or explain the reason or both. If he is not able to do anything within 7 days, if he is not able to do anything within the 7 days, then if the Mr. A, let's say it is a Mr. A, has received the intimation in the 88C but not able to furnish the reply, he can't file the next GSTR-1. Is it clear? डिफरेंस की बात करेंगे. हेमंत आपके क्वेश्चन की भी बात करेंगे. अलाउ मी 5-10 मिनट एक और क्वेश्चन पार करना, बट हम बात करेंगे. लेकिन पहले मुझे बताइए 88C का कॉन्सेप्ट एंड इंपैक्ट ऑन द GSTR-1 इज क्लियर? अब आया एक नया कॉन्सेप्ट 88D. अब आया एक नया कॉन्सेप्ट 88D. नाउ लेट्स से मिस्टर ए
has the amount in the GSTR-2B, let's say 10 lakhs rupees. But while furnishing the GSTR-3B, he has taken the ITC of 10 crore. Is it possible? Is it possible? Answer is yes. As per the law, how much he can take the ITC? Law के according कितना ITC मिलना चाहिए? 10 lakh की 10 crore. लॉ के अकॉर्डिंग आईटीसी कितना मिलना चाहिए? जितना 2B मार है. लॉ के हिसाब से इज एलिजिबल फॉर 10 lakh. बट आई टोल्ड यू ना कि 3B इज एडिटेबल. देन 3B has been GSTR 3B has been reported the ITC of 10 crore furnish the same. जैसे ये फाइल करेगा इसको तो 10 करोड़ मिल जाएंगे. उसके क्रेडिट लेजर में 10 करोड़ रुपए आ गए. डोंट यू थिंक दैट इट इज द लॉस टू द गवर्नमेंट? मैक्सिमम 10 लाख लेना चाहिए, लेकिन अब तो ये 10 करोड़ लेके गया. और माइट बी ही कैन यूज फॉर द लाइबिलिटी, माइट बी ही विल डिसअपियर. हाउ द गवर्नमेंट विल बी एबल टू कलेक्ट? They have introduced the concept of Rule 88D. They are saying the ITC as per 2B and ITC taken in 3B, अगर ये डिफरेंस प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली एक इंटीमेशन जाएगा. एंड अगर उस इंटीमेशन का या तो पेमेंट नहीं करता या रिप्लाई नहीं किया जाता, देन नेक्स्ट R1 नॉट एबल टू फाइल. अब एक बार लैंग्वेज रीड करते हैं. रीड कीजिए. ए रजिस्टर्ड पर्सन to whom an intimation has been issued in the Rule 88C shall not be allowed to file R1 or IFF unless he has deposited the amount or furnished the reply explaining the reason. What is the Rule 88D? Again, intimation has been issued in the Rule 88D, then not be allowed to file R1 or IFF explaining the reason or furnish the tax. एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मुझे नीचे करने दीजिए. लेट मी मेक इट डाउन. क्या वर्ड यूज कर रहा है? ही इज यूजिंग द वर्ड either paid the amount of excess ITC as specified in the intimation or has furnished the reply explaining the reason why he has taken the excess ITC. Rule 88D has been discussed in the chapter subsequently. तो हमने एक मोटा मोटी ब्रॉडली मैंने आपके साथ कंसेप्ट के बात कर लिया एंड विल डिस्कस द सेम इन डिटेल एज वेल. Quickly tell me, Rule 88C is the difference between which two figure? 88C किसके बीच का डिफरेंस है? 88C किसके बीच का डिफरेंस है? 13B 996 किसका डिफरेंस है? 2B 3B 1 3B 996 किसका डिफरेंस है? 88C is the difference between 88C. अच्छा, मेरे को वापस आवा दें. 88C और 88D कौन सा लाइबिलिटी का डिफरेंस है, कौन सा आईटीसी का डिफरेंस है? विच इज द लाइबिलिटी डिफरेंस, विच इज द आईटीसी डिफरेंस? रूल 88C इज द लाइबिलिटी डिफरेंस एंड रूल 88D इज द आईटीसी डिफरेंस. पहला पॉइंट. 88C अगर लाइबिलिटी का डिफरेंस है तो लाइबिलिटी तो मैं R1 में दिखाता हूं और 3B में दिखाता हूं, तो R1 माइनस 3B. और आईटीसी कौन से फॉर्म से लिया जाता है? इज इट 4A 6A 2A 2B? विच फॉर्म आई एम यूजिंग? 2B. तो आईटीसी एज पर 2B और आईटीसी क्लेम्ड इन 3B 2B का डिफरेंस है. ठीक है, एक बार क्विकली बताना
क्विकली बताना. देन what is the inward supply for which form is for inward supply for the ISD taxpayer? ISD taxpayer कौन से फॉर्म में अपनी इनवर्ट सप्लाई देखेगा? Quickly tell me in which form ISD supplier will see his inward supply, will be able to see his purchase. ISD taxpayer अपनी परचेज कहां पे देखेगा? कौन से फॉर्म में उसको वो परचेज दिखाई देगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2A, 4A, 6A. In which form ISD taxpayer would be able to see his inward supply? Answer is GSTR-6A. ISD कौन सा रिटर्न फाइल करता है? GSTR-6. तो इसमें 6A ऐड कर दो. इसमें A ऐड कर दो तो क्या बना? GSTR-6A. कंपोजिशन टैक्स पर कौन सा रिटर्न फाइल करता है? कंपोजिशन टैक्स पे कौन सा रिटर्न फाइल करता है? टैक्स पे करता है CMP 8 से और रिटर्न फाइल करता है GSTR-4. तो उसकी इनवर्ट सप्लाई कहां पे आती है? GSTR-4A में. 4A में. कोई मुझे बता पाएगा डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B? एक दो वर्ड भी बता दो, सफिशिएंट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GSTR-2A एंड 2B? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GSTR-2A एंड 2B? I'm expecting some answer from you. What is the difference between 2A and 2B? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस. चलो मुझे एग्जाम्पल का आंसर दे दो. आप वैसे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो. अगर जनवरी 24 का GSTR-1 सप्लायर ने लेट फाइल किया है आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द GSTR-1, Jan 24 का GSTR-1 सप्लायर ने Jan 24 की GSTR-1 की ड्यू डेट 11th के बाद फाइल किया है, तो ये ट्रांजेक्शन 2A कौन से मंथ में जाएगा और 2B में कौन से मंथ में जाएगा? Tell me, if the supplier has filed the GSTR-1 for the month of January after 11th, let's say 12th को फाइल किया, 15th को फाइल किया, तो ये ट्रांजेक्शन 2A कौन से मंथ में जाएगा एंड ये ट्रांजेक्शन 2B के कौन से मंथ में जाएगा? Which 2B it will goes and which 2A it will goes? Absolutely correct. Very nice, beta. Very nice. Very nice. Very nice. The answer would be 2A will always be same month. Means जनवरी का 2A and 2B next, मतलब फरवरी का 2B. ये ट्रांजेक्शन 2A कौन से मंथ के 2A में दिखाई देगा? जनवरी के. ये ट्रांजेक्शन कौन से मंथ के 2B में दिखाएगा? फरवरी में. फाइन. GSTR-2A हर दिन अपडेट होता है, बट 2B याद रखना, आई एम एडिंग न्यू वर्ड टू ऑल ऑफ यू. GSTR-2B is an static document. GSTR-2B is an static document, fixed document है जो हमेशा 14th को जनरेट होता है, आफ्टर 13th को जनरेट होता है. 13 क्या है? QRMP टैक्स पेयर के केस में ड्यू डेट है, तो हमेशा 13 के बाद मतलब 14th को जनरेट होता है. अगर आप चाहो भी तो यू कांट सी ऑन 11, यू कांट सी ऑन 12, यू कांट सी ऑन 13. नो, इट इज अ फिक्स, it is a static document which could be generated only after the due date, that is 14th. Only after the due date, that is 14th. Very nice, Ashutosh. Very nice. ठीक है ना? To be हमेशा आफ्टर द QRMP का ड्यू डेट मतलब 14th को जनरेट होता है एंड वो फिक्स रहेगा. Let's say I'm talking about the March 2B. Can you please confirm on which date it will be generated? March 2B, on which date it will be generated? March GSTR-2B, on which date it will be generated? Exactly date and month भी लिखना मेरे को. क्या डेट है और क्या मंथ है? डेट ऑफ जनरेशन ऑफ द 2B. क्या होगा डेट?
हेमंत कहाँ चले गए? हेमंत थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर। कोई बात नहीं बेटा। देख, मैं टू बी कब जनरेट, देखो टू बी क्या बार बार चेंज होगा? नहीं। टू बी तो सप्लायर ने अगर GSTR-1 टाइमली फाइल किया तभी टू बी बनेगा। तो सप्लायर का GSTR-1 मंथली है तो 11 ड्यू डेट है, और क्वार्टरली है तो क्या ड्यू डेट है? 13। तो उसके बाद जो 14 है, हमेशा 14 को जनरेट होगा टू बी। और जो टू बी बन गया ना, वो टू बी कभी चेंज नहीं होगा उस महीने का। एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वट एवर द लॉ इज अवेलेबल और इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है? तो टू बी जो आज बनेगा ना, वो फिक्स है। 14th को जो टू बी बनेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है? लेकिन टू ए तो क्या है? एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। डायनेमिक मतलब हर दिन चेंज होगा। कोई सप्लायर है, उसने GSTR-1 जनवरी का फाइल किया, मेरा जनवरी का टू ए चेंज हो गया। 10 दिन बाद में कोई और सप्लायर ने GSTR-1 फाइल किया मेरा जीएसटी नंबर यूज करते हुए, तो मेरा चेंज हो जाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू ए एंड टू बी? द वन आंसर would always come कि 2A is a dynamic document, 2B is a static document। स्टेटिक का मतलब क्या है? एक फिक्स है, एक बार जब जनरेट हो गया उसके बाद चेंज नहीं होगा। मतलब 2A कैन बी अपडेटेड मल्टीपल टाइम्स, बट 2B इज बस फिक्स, जनरेटेड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, उसके बाद वो रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल कितना दिन में ऐड करना होता है? रूल 10A, रूल 10A कहता है कि आपको अपना बैंक अकाउंट, पहले वो 45 डेज की बात करता था, अब वो 30 डेज की बात करता है। अगर मान लो मैं नया टैक्स पेयर हूं, एंड इफ आई हैव नॉट एडेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, देन अब अगर प्रिस्क्राइब टाइम की बात करोगे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ये वाला बात। तो कहता है कि अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया तो आप GSTR-1 या IFF फाइल नहीं कर सकते। तो अब एक बार बताओ, जितनी भी कंडीशन आपको याद है, GSTR-1 या IFF कौन कौन से सिचुएशन में फाइल नहीं कर सकता? क्विकली टेल मी व्हेन आई एम नॉट एबल टू furnish my GSTR-1 or IFF. Quickly tell me. We have discussed 4-5 situation. We have discussed multiple situation, right? Tell me, जो आपको याद है, टेल मी जो भी आपको याद है। हमने मल्टीपल सिचुएशन, मल्टीपल पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि GSTR-1 हम कौन कौन से सिचुएशन में फर्निश नहीं कर सकते। उसमें से जितने भी पॉइंट आपको याद है, काइंडली गिव मी इन दैट चैट। वी हैव डिस्कस टोटल 5 पॉइंट। We have discussed that GSTR-1 or IFF cannot be furnished. There are 5 points we have discussed. Can you please tell me any one or two point? Any one or two point? Can you please tell me any one or two point that GSTR-1 cannot be furnished? फाइल नहीं कर सकते? Absolutely correct. Not updated the bank detail, not filed the previous 3B, not filed the previous one, rule 88C and rule 88D. 5 बातें हो गई। Fine. Let's move further. Let's move further. Let's move further.
Is it clear? What are the content of the GSTR? What are the content of the GSTR1? The content of the GSTR1 will be GST number, legal name, trade name, aggregate turnover, month, HSNY summary, details of the document, etc. We will discuss. Allow me only 1 minute. करेक्ट ना? सो GSTR1 कंटेंट क्या क्या होते हैं हम उसमें कल बात करेंगे. विल डिस्कस टुमारो इन डिटेल कि व्हाट आर द कंटेंट इन द GSTR1. ठीक है, आज के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि कंटेंट को एक बार फॉर द टाइमिंग छोड़ देते हैं. ठीक है, फॉर द टाइमिंग वी विल लीव द कंटेंट अभी. ठीक है, तो what kind of the details of the outward supply required to be furnished, that we will discuss. B2B, B2C, it means details of the outward supply. 1A we have discussed. That I will discuss in detail. So I will explain in the different manner, but I will explain. Okay. Invoice related to details that we have discussed. HSN details. Correct. What is the HSN? What is the HSN? Have you seen the code? See, when I am purchasing, so when I am making an invoice, or you have seen in invoice, some code is written 9986 5092. Some whenever you are purchasing, or whenever I am any party is making the sale, he is required to report the HSN. HSN का पूरा नाम क्या होता है? Harmonized System of Nomenclature. What is the full name of HSN? Harmonized System of Nomenclature. ठीक है, सर्विस में नॉर्मली हम कहते हैं SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड, बट HSN इज ए ब्रॉड टर्म. नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ HSN इज डिपेंड अपॉन कितनी आपकी टर्नओवर है. If I am having the turnover in the preceding financial year, let's say up to 5 crore, then I have to report 4-digit HSN code on B2B supplies. If I have the B2C supply, then also 4, but it is optional. If I am not reporting, no problem. कहाँ पे रिपोर्ट करना है? टैक्स इनवॉइस में एंड GSTR1 में एंड जो एनुअल रिटर्न होता है GSTR9 उसमें. ठीक है, और अगर मेरी टर्नओवर इफ इट इज मोर देन 5 करोड़, देन आई हैव टू रिपोर्ट 6 डिजिट फॉर B2B as well as B2C. The optional part is only if turnover is up to 5 crore. Optional part is only if the turnover is up to 5 crore. Now the point is amendment. Now the point is amendment. Can you file the revised return? I have furnished the GSTR1. I have furnished the GSTR1. Can you file revised GSTR1? In the GST, there is no concept of revised return. In the GST, there is no concept of revised return. So what is the concept? Concept is amendment. मतलब क्या हुआ? Let's say अगर कोई मैंने mistake की है in the month of December, then earlier I have the option to amend the same in the next GSTR1.
पहले क्या था, अगर मैंने कोई मिस्टेक की है, if I have done any mistake, any amendment, any error while filing the GSTR1 of any month, you can do the amendment in the next GSTR1. ये कब तक अमेंडमेंट कर सकता है? क्या मैं लाइफ टाइम अमेंडमेंट कर सकता हूँ? नो, दे आर सेइंग एनी ट्रांजेक्शन ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर कैन बी अमेंडेड till 30th November following the end of financial year. एक मिनट 30th November or annual return, furnishing of annual return, filing of annual return, whichever is earlier. Can you please tell me the same time limit you have already discussed somewhere else? Same time limit you have already discussed somewhere else. Can you tell me कहां पर आपने पढ़ा है? ये सेम कहीं ना कहीं आपने और पढ़ा है. In the GST, you have discussed at some other places also. Two places I can say I am expecting that you will give me the answer for two places at least. आपको मुझे टाइम तो बताना पड़ेगा कि एक सेम टाइम हमने दो जगह पढ़ा है. मैंने दो बार डिस्कशन किया आपके साथ. आई माई सेल्फ हैव डिस्कस्ड टू टाइम्स. टू प्लेसेस वी हैव डिस्कस्ड दिस टाइम लिमिट. कौन सा टाइम लिमिट? 30th November, 30th November after the end of the financial year, 30th November following the end of the financial year, after the end of the financial year, or furnishing of annual return, whichever is earlier. ये टाइम लिमिट जीएसटी में कई जगह है, बट दो जगह मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं. यू टेल मी. यस, वन आंसर हैज बीन गिवन करेक्टली बाय हेमंत. वेरी नाइस बेटा. नहीं, कोई बात नहीं. आंसर इज that we have discussed this time limit in the 16.4 subsection 4, that last date to claim the ITC. और ये सेम टाइम लिमिट हमने 34 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था. लास्ट डेट टू डिक्लेयर द क्रेडिट नोट. ये तो मैंने ही पढ़ाया है आपको. और जब मैं ये बता रहा था तब मैंने आपको ये वाला पॉइंट लिंक करके बताया था. सो आई एम एक्सपेक्टिंग बोथ शुड कम फ्रॉम योर साइड, नो प्रॉब्लम. बट जीएसटी आप लिंक लगाना स्टार्ट कीजिए. यू ट्राई टू interlink the chapter, then you will be able to understand the concept very well. Otherwise ये प्रॉब्लम है. So ये तो बात पहले थी अमेंडमेंट की. नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ 1A, जिसमें आपके पास सेम टैक्स लाइबिलिटी, सेम टैक्स पीरियड की जो R1 आपने फाइल की है उसका आप अमेंडमेंट कर सकते हैं. यू कैन डू द अमेंडमेंट इन द R1A ऑफ द सेम टैक्स पीरियड. ठीक है. मैं डिटेल में ऑलरेडी आपके साथ बहुत कर चुका हूं, सो आई एम नॉट गोइंग
in detail. I have already discussed so much of the point. Let's read the 1A का कुछ important point अगर है तो. 1A is an optional. We have already, it can be filed only once. Yes. Amend the detail of the GSTR 1A for current tax period only. The corresponding effect will reflect in the through the GSTR 1A on the liability shall be reflected in the 3B of same tax period, but 2B next tax period. Clear है ना ये वाला point? Yes, it can be amended only electronic. Yes, ठीक है. The due date of the 1A, there is no due date of the 1A. It will open after the due date of the 1 and filing of the done 1, whichever is later, and it will be available till the filing of 3B. QRMP टैक्स पेयर एक बार क्विकली बताना. QRMP टैक्स पेयर के लिए 1A would be available for M1 and M2 या only for quarter it would be available. GSTR 1A for QRMP taxpayer, will it be available for M1 and M2? Yeah, it is only after the end of the quarter. आशुतोष आपने क्वेश्चन पूछा था ना सर, दोनों महीने के 2A में रहेगा या सिर्फ रेस्पेक्टिव मंथ में ही रहेगा? एक ही मंथ में रहेगा. जिस महीने का GSTR 1 है उसी महीने के 2A में जाएगा, दोनों महीने में नहीं जाएगा. ठीक है. The answer is GSTR 1A for the QRMP taxpayer would be available only for quarter. After the end of the quarter, it will be not available on M1 and M2. How are the details of the outward supply furnished in the prior that we have discussed? Okay. Rectification of error that we have discussed. Same rectification of error. हो. Time limit for rectification we have already discussed. 30th November या ड्यू डेट नहीं, एक्चुअल डेट. यहाँ पे वर्ड ड्यू डेट मत ऐड करना. यहाँ पे एक्चुअल फाइलिंग डेट है. यहाँ पे भी पहले ड्यू डेट हुआ करता था बहुत टाइम पहले. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड डेट 30th November. Please, you might get confused that you will write due date of GSTR-3B for the month of November. No, it is 30th November. Fixed है. इस नंबर को फिक्स कर दिया. ठीक है. Nil GSTR1 can be filed. Answer is yes. It can be filed online. Even it can be filed by SMS also. कब? जब आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, you do not have any outward supply, then you can file the nil GSTR1 even through SMS also. This facility has been given. Maximum time limit for furnishing the GSTR1. Now in the GST returns, first time they have added whether it is GSTR1 or GSTR-3B or any other return 4, 5, 6. For all they are saying you can file the GST return within a period of 3 years. 3 years would be counted from the due date of furnishing of the details. It will be counted from the due date of furnishing that detail. This time limit can be extended by the government depending class of the registered person as per the notification. Now, what is the time? We have still half an hour. We can discuss. Are you there? Able to understand? Any question? Are you able to understand, right? Are you able to understand? ज्यादा ओवर तो नहीं हो गया? अभी
भी तो दिखा सकते हैं. एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम. यस यस आशुतोष, अभी 3B एडिटेबल है. वट एवर यू लाइक टू वॉन्ट, वट एवर यू लाइक टू रिपोर्ट, यू कैन. ठीक है. GSTR-2B जो है ना, वो एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, बिकॉज ये सिस्टम जनरेट करता है. ये दो पार्ट में डिवाइड है, एलिजिबल आईटीसी और इनएलिजिबल आईटीसी. एक बार एक काम करते हैं, मैं आपको ना प्रैक्टिकली बताता हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर. मैं आपको एक्चुअल लाइव बताऊंगा ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर. गिव मी 1 मिनट. मैं लाइव पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल पर जाता हूँ, एंड देन आई ट्राई टू ओपन द GSTR-2B. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर बेटर, राइट ना. जब मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव बताता हूँ, व्हेन आई एम शोइंग प्रैक्टिकली, यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर. एम आई राइट? अब देखो, लेट्स से मैं जनवरी में गया. On which date the January GSTR-2B would be able to generate? On which date the January GSTR-2B would be able to generate? कौन सी डेट को GSTR-2B जनवरी का बन गया होगा या बनेगा? Can you please tell me on which date the 2B would be generated? Answer is, आंसर दो, क्विकली आंसर दो मुझे. 14th. मैंने आपको कहा था ना, आफ्टर द ड्यू डेट इट इज मेड अवेलेबल. आपको थोड़ा सा पीछे वाले पीरियड में लेके जा रहा हूं. ठीक है, लाइक लेट्स से सी द 2B. GSTR-2B would be divided in two parts: ITC available and ITC not available. What does it mean? On some type of the transaction, you might have the eligibility and you might not have the eligibility. Please note, GSTR-2B is able to capture only two type of the transaction as ineligible ITC. In the GST law, there are various type of the situation in which you are not able to claim the ITC, but system cannot understand. Sir, you tell me, you have purchased a motor car, whether you are able to take the ITC or not, it depends upon the multiple condition. It should be more than 13-seater, then eligible. If it is used for further supply, you can take the ITC even for 13-seater. If it is for training, you can take the ITC. Will that be also come under eligible or not eligible? No, that will never come under ineligible. System cannot understand those ITC ineligibility. Then which all transaction can be understood by the 2B. Only two transaction. वो कौन से हैं दो ट्रांजेक्शन? एक 16(4) के बाद में एंड दूसरा जहां पे C+S है ऑफ अदर स्टेट. मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं. माइट बी आई एम गोइंग लिटिल बिट बियॉन्ड द एकेडमिक पार्ट. माइट बी आई एम गोइंग little bit, explaining little bit. You might be or might not be able to find. I have not read this particular 2B part, but मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं ताकि माइंड में रजिस्टर हो जाएगा आपके. ठीक है. ITC is being divided in two part: available and not available. Not available is based on the two type of the transaction. First is 16(4). What is the 16(4)?
Time limit to take the ITC. Suppose let's say any financial year 21-22 का कोई GSTR-1, let's say March 22 का GSTR-1, March 22 का GSTR-1 is being furnished after 30th November. अभी 24 कह देता हूं. March 24 का GSTR-1 is being furnished after 30th November 24. एक और क्विकली आंसर करना मेरे क्वेश्चन का. व्हाट इज दैट मैक्सिमम टाइम लिमिट टू फाइल द GSTR-1? कब तक मैं GSTR-1 मैक्स टू मैक्स फाइल कर सकता हूं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यार. आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर. बट सर आरसीएम लायबिलिटी ऑलवेज शुड बी एडिटेबल. हाँ ना, एडिटेबल है, मना ही नहीं है ना. आरसीएम तो हमेशा ही एडिटेबल रहेगा. मैं तो इवन आरसीएम की बात नहीं करता हूं. आप तो किसी भी टेबल में डाल सकते हो ना. आज तो 3B एडिटेबल है ही ना. देख आशुतोष, वो मैं पॉइंट इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि आईएमएस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, लॉ का पार्ट नहीं है, आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, वो प्रैक्टिकली है बिल्कुल. आई कैन नॉट डिस्कस दिस बिकॉज देन इट विल गो मच मोर हायर, मच मोर बियॉन्ड योर एकेडमिक और योर कट ऑफ डेट. आपके लिए जो कट ऑफ डेट है वो 30 नवंबर है और 30 नवंबर तक लॉ का पार्ट नहीं बना आईएमएस, इसीलिए वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा. बट यस, आंसर इज 3 years. आंसर इज 3 years. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अभी क्या है, अगर मार्च 24 का GSTR-1 दिसंबर 24 में फाइल किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरा मार्च 24 का GSTR-1 पेंडिंग था. माई GSTR-1 ऑफ मार्च 24 वाज पेंडिंग. ठीक है. कैन आई फाइल इन दिसंबर 24? व्हाई नॉट? 3 year you have the time. I can file December 24. Yes. While filing the December 24, I am adding, let's say, GST number of Ramesh. क्या रमेश ITC ले सकता है उस डॉक्यूमेंट का? आंसर इज नो. व्हाई? टाइम लिमिट ऑफ 16/4 इज 30th November और एनुअल रिटर्न whichever is earlier. 30th November तो क्रॉस हो गया. आंसर इज नो ITC. Therefore, the system will report auto-populate this purchase in the Ramesh to be under this section. नवंबर के बाद जो भी GSTR-1 फाइल होता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें जो भी GST नंबर यूज किया है कस्टमर का, all will be see this transaction under ITC not available. And one more thing, my dear friend, that you might have read the circular 170 in which you are able to understand C+S of other state ITC not eligible. मतलब, let's say I'm registered in Delhi, I am going to Mumbai and staying in hotel. Mumbai wala hotel will raise the tax invoice by charging CGST and SGST. And let's say I have given my GST number, he will report my GST number, but tax he will charge C+S. That transaction will come in my Delhi GST number as ITC not available. ठीक है. बाकी सारे ट्रांजेक्शन ITC अवेलेबल में आते हैं. They are dividing all other ITC, ITC from ISD, ITC on reverse charge, import of goods. So they are dividing in multiple part. Sorry. ITC on import of the goods means ये जो आइस गेट टर्म सुना आपने, यू माइट हैव हर्ड द वर्ड आइस गेट, जो बिल ऑफ एंट्री होती है, ये वहां से इसको सिस्टम ने लिंक कर दिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. GST portal is linked to the ICE gate. Now from the ICE gate the data are coming in my 2B. अगर मैंने कोई ओवरसीज से परचेज किया गुड्स, तो ये जब मैंने कस्टम क्लियरेंस करवाया, I have filed my bill of entry, that bill of entry will appear in my 2B. और all other ITC, inward supply from ISD or reverse charge का ITC. So these type of the transaction will appear and I can check. Let me go again to the, now you will read and then you will able to understand more better.
अब आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा. It is a auto-generated statement. Details of inward supply in respect of ITC available and ITC cannot be availed by any registered person within the such period of taking registration. ये रूल 38 है, ये हम बात करेंगे. ये रूल 38 है. See, this is different. This is different. ठीक है, ये completely theoretical है. Let me read rule 38. Rule 38 क्या कहता है? Rule 38 कहता है कि Rule 38 is giving some more situation where ITC cannot be availed. This is not GSTR-2B. Please note, this is not GSTR-2B. Rule 38 is imposing certain more condition where ITC can't be availed. So what are the conditions? By any registered person within such period as may be prescribed, by any registered person who has been defaulted in payment of tax where default has been continued for such period as may be prescribed. एक बात ध्यान रखना, इन सब में, इन रूल 38 में हर जगह वर्ड प्रिस्क्राइब्ड लिखा है. At every place the word prescribed is written. At every place the word prescribed is written. It means government has the power to prescribe more condition where ITC will not be available to the customer. अभी तक ये प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है. All has not been prescribed as of now. ठीक है. But yes, they can say that what all are situation where the ITC is not available. ठीक है. कुछ हमने बात already कर ली है, like rule 88C and 88D. What is the rule 88C? 88C you can easily tell. Can you quickly tell me what is the rule 88C? Quickly tell me what is the rule 88C? Can you please tell me rule 88C क्या है? Difference between liability reported in the GSTR1 and liability not paid in the GSTR3B. Correct? And then, so rule 88C is saying that, a second. Where the tax payable by a registered person in accordance with R1 or IFF exceed the amount of tax payable in accordance with the return of 3B by such amount. यहाँ पे वर्ड क्या है? एंड है, ध्यान रखना. हम एक बार 88D में भी जाएंगे और वहां पे क्या वर्ड है वो भी अंडरलाइन करेंगे. ये मिस्टेक हो जाती है कि एंड है या और है. सच अमाउंट and such percentage as may be recommended by the council by the said registered person shall be intimated of such difference. तो अगर जितना भी उसने 25 लाख 20% फर्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब किया, नॉट प्रिस्क्राइब, रिकमेंडेशन, इट इज नॉट रूल, इट इज ओनली रिकमेंडेशन बाय द काउंसिल. सो जो भी काउंसिल मीटिंग होती है उसमें रिकमेंड करते हैं. तो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने रिकमेंड किया था देन इट वाज 25 लाख एंड 20%. Such registered person shall be intimated in the prescribed form electronically. In the said intimation have the difference between 1 and 3B and he will be directed to pay the difference or explain the reason within 7 days. अगर वो explain नहीं करता, पे नहीं करता, in that case वो intimation जब 7 दिन के बाद में क्या होगा? He cannot file the GSTR1. And what is the 88D? Let's say 88D क्या था? सेम बात है. 88D में क्या है कि ITC claimed in 3B and ITC appearing in 2B, then pay the amount equal to the excess ITC availed in 3B
along with interest or explain the reason within a period of 7 days. Again, अगर वो नहीं कर पाएगा, what will happen? He cannot file the GSTR-1. Let's move to the GSTR-2A. तो अभी तक हमने 30 पेज के आसपास कर लिया. We'll have the 10-15 minute. We'll discuss some more point and then we'll 2A and 2B मैं आपको वैसे बता चुका हूं. Let me see. ये पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं. GSTR-2B में ये वाला पॉइंट आप समझिए. ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए. GSTR-2B में लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी 25 GSTR-2B. जनवरी 25 GSTR-2B में ट्रांजेक्शन कौन सा आएगा जो लास्ट मंथ की ड्यू डेट के बाद में ऐड हुआ है, लास्ट मंथ की ड्यू डेट के बाद में ऐड हुआ है और करंट मंथ की ड्यू डेट तक ऐड हुआ है. आर यू करेक्ट? डू यू एग्री विद मी? मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट मंथ की ड्यू डेट क्या थी? 13th. तो कोई भी ट्रांजेक्शन 14, अगर क्वार्टरली है तो 14 और मंथली है तो 12 ऑनवर्ड, 12 या 14 दिसंबर के बाद किसी ने R1 फाइल किया है और कब तक फाइल किया है? टिल 11th और सॉरी let me repeat once again. एक बार मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं. जनवरी 2025 की GSTR-2B में ट्रांजेक्शन कौन से पीरियड का आएगा? एज्यूम दैट अभी हम मंथली टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं. लेट्स से मंथली टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं. टेल मी जनवरी 25 के GSTR-1 का ड्यू डेट क्या है? क्विकली टेल मी जनवरी 25 के GSTR-1 का ड्यू डेट क्या है? क्विकली टेल मी व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द जनवरी GSTR-1? 11th Feb. So I can say 11th Feb तक और लास्ट मंथ का दैट इज दिसंबर, इसका एक बार ड्यू डेट बताना. दिसंबर 24 का ड्यू डेट क्या है GSTR-1 का? January 11. So I can say any transaction which is being reported by monthly taxpayer in any GSTR-1, कोई भी GSTR-1 जो फर्निश हुआ है बिटवीन 12th Jan, इसमें मैंने +1 ऐड कर दिया, 12th Jan to 11th Feb, that will come in the January GSTR-2B. Is it okay? एग्री कर रहे हैं इस बात से? डू यू एग्री विद दिस? अब लेट्स से अगर मैं QRMP की बात करता हूं, एज्यूम दैट QRMP टैक्स पेयर है, तो मैं कहूंगा 11th की जगह ड्यू डेट क्या होती है उसकी? 13th. एनी GSTR-1 furnished between 14th Jan to 13th Feb, then QRMP टैक्स पेयर के लिए आएगा. डू यू एग्री विद दिस? यहां पे मैंने 14 to 13 लिया है और वहां पे मैंने 12 to 11 लिया था. 2B की बात कर रहा हूं. बट अगर 2A होता तो वी आर लेस्ट बॉदर अबाउट द डेट, बिकॉज 2A whenever the GSTR-1 of a tax period is being furnished, उसी टैक्स पीरियड का 2A अपडेट हो जाएगा. तो 2A इसीलिए कौन सा डॉक्यूमेंट है? डायनेमिक. एंड 2B इज एन स्टैटिक डॉक्यूमेंट. 2B इज एन स्टैटिक डॉक्यूमेंट. अगेन मैं इस डिटेल में तो नहीं जाऊंगा इस लैंग्वेज में, बट मैंने आपको एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड. ठीक है. GSTR-3B कल बात करेंगे. विल टॉक अबाउट टुमारो. सो कल हम क्या करेंगे? कल के लिए हमारे पास काफी एजेंडा है. विल टॉक अबाउट 3B. ऑल टुगेदर हमने टच नहीं किया.
यू हैव नॉट टच्ड अपॉन एट ऑल। 3B के रिगार्ड में हमने एलिजिबिलिटी ऑफ QRMP थोड़ा हम ये डिस्कस करेंगे, नील 3B के बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट मल्टीपल थिंग्स ऑफ 3B एंड देन GSTR-1 क्वार्टरली फाइल IFF है ना मिताली, IFF है ना QRMP के लिए, सो देयर इज एन IFF ना भाई, M1 के लिए IFF तो है ना। आई डू अग्री दैट वन विल बी फाइल्ड बाय QRMP टैक्स पेयर। कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, वी हैव द 7-8 मिनट, लेट मी आस्क द सम क्विक राउंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर, यू गिव मी द आंसर, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, करंट टैक्स पीरियड का अमेंडमेंट मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, लेट्स से व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ क्वार्टरली 3B, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ क्वार्टरली 3B, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ क्वार्टरली 3B? 22 या 24? 22 या 24? What is the due date for monthly 3B? What is the due date for monthly 3B? Answer is 20. Answer is 20. Next question. What is the due date for payment of tax for M1 in case of QRMP? What is the due date for payment of tax in case of QRMP for M1? Answer is 25th. 25th. Supplier will, if supplier reporting in the GSTR-1 the GST number of composition taxpayer, then composition can see in which document. Composition can see his inward supply in which document. Composition को अपनी inward supply कहां दिखाई देगी? It is GSTR. Absolutely correct, beta. Mitali beta, very nice. It is very nice, Jenny. It is GSTR-4A. It is GSTR-4A. Absolutely correct. Which ITC is not eligible? Which ITC will come in the GSTR-2B under ineligible section? हालांकि ये पार्ट आपके एकेडमिक में नहीं है, एकेडमिक में नहीं है तो जस्ट खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दीजिए, इवन इफ यू विल इग्नोर नो प्रॉब्लम। ये पार्ट जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, बट अदरवाइज एकेडमिक में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो ड्यू डेट, हाँ ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन सा रिटर्न्स ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है? कौन सा रिटर्न या कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है फाइल करना? हमने 2 स्टेटमेंट की बात की थी कि ये ऑप्शनल है, फाइल नहीं करोगे तब भी चलेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला 2 स्टेटमेंट का बात किया था जो ऑप्शनल था, मैंडेटरी नहीं है, वो कौन कौन से हैं? द आंसर इज GSTR-1A and IFF. These are the optional. अगर मैंने रिगार्डिंग द ITC, इन ITC was not eligible, अरे वो आपका एकेडमिक में नहीं है, लीव इट फॉर द टाइमिंग, लीव इट। मैं ये क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करना चाहता, बट आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, बट अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस। When I cannot file my GSTR-1, there are 5 situations we have discussed कि हम GSTR-1 कब फाइल नहीं कर सकते। When I cannot furnish my GSTR-1, any 2-3 answer you can give. When I cannot furnish my GSTR-1. Very nice beta, absolutely correct. करेक्ट, बैंक डिटेल ऐड नहीं किए मैंने रूल 10A में, 88C या 88D नहीं किया तो, GSTR-3B प्रीवियस फाइल नहीं किया तो एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड GSTR-1 फाइल नहीं किया तो एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी नाइस, ऑल 5 you have pulled, very nice, very nice.
HSN कोड की रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस की थी, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 2 डिजिट, समथिंग लाइक दैट. कैन यू टेल मी, if my turnover is up to 5 crore, then what is the digit I need to mandatorily report the HSN code? Is it for B2B and B2C both, or only for B2B? Is it for B2B and B2C both, or only for B2B? Is it mandatory for both? Is it mandatory for both? नहीं, mandatory तो सिर्फ B2B के लिए है, B2C के लिए ऑप्शनल है. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो कितना डिजिट मुझे मेंशन करना पड़ेगा HSN कोड? आंसर इज 6 डिजिट. एक हमने बात किया था, जो टैक्स का पेमेंट करेंगे उसके लिए 2 मेथड सजेस्ट किए थे. 2 मेथड सजेस्ट किए थे. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द 2 मेथड फॉर QRMP टैक्स पेयर? एब्सोल्युटली करेक्ट. एक था फिक्सम मेथड और एक दूसरा था सेल्फ असेसमेंट मेथड. फिक्सम मेथड में हम अगर पीछे वाले फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है तो मैं कितना परसेंट पे करूंगा? मैं हाउ मच परसेंटेज आई विल यूज? 35%. एब्सोल्युटली करेक्ट. ग्रॉस लाइबिलिटी का, कैश का, आई विल पे 35% कैश का या ग्रॉस का? कैश लाइबिलिटी का. और लास्ट फ्रीक्वेंसी अगर मंथली है तो मैं फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज पे करूंगा इस महीने? 100%. 100%. एब्सोल्युटली करेक्ट. 2B would be generated on which date? GSTR-2B would be generated on which date? करेक्ट. 14th को जनरेट होता है. 14th को जनरेट होता है, राइट. 14th को जनरेट होता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर कौन सा रिटर्न फाइल करेगा? विच रिटर्न विल बी फाइल्ड बाय द कंपोजिशन टैक्स पेयर? Which return will be filed by the composition taxpayer? Right. CMP 8 and GSTR 4. चलो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? CMP 8 इज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स. क्वार्टरली बेसिस पे उसे टैक्स पे करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ CMP 08. दैट इज 18th आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर है. और GSTR 4 साल भर का रिटर्न एक ही बार, ओनली वन रिटर्न इज एप्लीकेबल, GSTR 4, दैट विल बी आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. कल हम GSTR-3B के बारे में बात करेंगे एंड GSTR-1 के स्टेटमेंट के कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बात करेंगे एंड विल कंप्लीट एनी बैलेंस थिंग्स. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू आर रिक्वेस्टेड टू आस्क. आपका और कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए मुझे. डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? सो आज की मैंने पीपीटी बनाई तो है. आई विल शेयर ऑल्सो पीपीटी. आई विल अरेंज टू अपलोड. बट मैंने यूज नहीं की क्योंकि because you are all are new to the GST returns part, so therefore I have tried to explain from very layman language instead of the chart which I prepared. Now if you see the chart now you would be able to link. See, this is the so how to opt for QRMP. Just let me complete. QRMP का option you can change for every quarter. अभी आप मंथली में जा सकते हो, वापस क्वार्टरली में भी जा सकते हो. टाइम पीरियड टू ऑप्ट इन द न्यू स्कीम क्या है? टाइम पीरियड, लेट्स से आप जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए QRMP में जाना चाहते हो तो QRMP ऑप्ट करने का ऑप्शन प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा है? अप्रैल टू जून. इसके फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ मींस 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा. जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए आप QRMP में जाना चाहते हो तो पीछे 2 महीने पहले ओपन हो जाएगा, मतलब 1 मई, और करंट मंथ तक ओपन रहेगा, मींस 31 जुलाई तक. मैं रिपीट करता हूं, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए लेट्स से इफ यू लाइक टू गो टू QRMP, क्या टाइम पीरियड है? ये जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का विंडो जीएसटी पोर्टल में ओपन हो जाएगा 2 महीना पहले, दैट इज 1 मई. और ये कब तक रहेगा? करंट मंथ फर्स्ट मंथ के एंड तक, 31 जुलाई तक रहेगा.
क्विकली मुझे बताइए जन टू मार्च के लिए, जन टू मार्च 2025 के लिए मैं QRMP में जाना चाहता हूँ, ये विंडो कब ओपन होगा और कब तक रहेगा और गोइंग टू QRMP? क्विकली टेल मी दैट जन टू मार्च क्वार्टर के लिए मैं QRMP में जाना चाहता हूँ, when this window will be available for selecting me to opt QRMP and by which month it will be available, start date and end date. -2 मंथ कर दो, -2 मंथ क्या आएगा? 1 नवंबर 24 एंड देन कब तक अवेलेबल रहेगा? 1 मंथ तक, इट मीन्स 31 जनवरी तक. एक बार क्विकली कंफर्म करो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? सो ये पीपीटी मैं अरेंज कर दूंगा. आई विल अरेंज टू अपलोड दैट पीपीटी टू ऑल ऑफ यू फॉर द बेनिफिट. एंड आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. माई रिक्वेस्ट वुड बी मस्ट कम टुमारो सो दैट एंटायर कॉन्सेप्ट जो आज हमने डिस्कस किया वो कल कंप्लीट हो जाएगा. गुड बाय टू ऑल. अशोक जी, अजीत जी, हम बंद कर सकते हैं. आज की क्लास कंप्लीट हो गई. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू बेटा. अशोक जी, अशोक जी, आज की क्लास कंप्लीट हो गई है तो यू कैन क्लोज. थैंक यू.